players like Aniket Kawade, Rohan Gajjar, Kingshuk, Vedant and all. This will be a great learning lesson. And at the end of the season, he will be such a fantastic cricketer, no doubt about it. Krish. Nicely getting behind the line of that ball. Nicely punched away. We'll have to wait and watch. A man in chase. The ball has does not have enough gas on it to go past the boundary line. I'm sure the umpires will check it though. Some room on offer. Nicely getting into a good position and punching it away. Not such a good effort there by the man at point. Slightly in an awkward position. Looks like it was Aniket. Enabling the batsman to take those 3 runs. It's going to be Jai Kedia on strike now. Yes, they're checking, yes. Yes, so once again, a big thank you to Mr. Nikhil Patel and Mr. Pranav Ashar, the owners of Team Gladiators. Both these gentlemen are always ready to support all the outdoor activities at the Goregaon Sports Club. As we all know, Nick Patel will definitely be a part of the 45 plus tournament. A very good head over his shoulders. Very passionate owner and a very passionate cricketer, Nick Patel. Yes, so runs allotted. That's the call from the third umpire. 3 runs. The score on to 13. 13 for 1. So yes, Nikhil Patel and Pranav Ashar will be wanting their team to win the 3 league matches and get their pride back. They are a fantastic team. Aniket, Gopal, Sanjit Srivastava. Superb bunch. Very well bowled. That was almost nothing short from Jai Kedia. He'll have to be tight with his technique, especially when he's Raghav, who really gets the ball to move late. Depends more on swing rather than pace. A decent start here for Raghav, no doubt about it. Right shot, nicely putting bat to ball. Good piece of fielding by Baba. What an icon player Baba is. Yes, the big daddy of the Goregaon Sports Club. Just giving it the direction, making good use of the depth of the crease, reading the length of the delivery quite early. Subramaniam, 15 for 1. The man on strike, Jai, a naturally gifted player. And that ball really popped out of his hands. That was a regulation catch. Got into a good position. He was a goner for all my money. That was nicely bowled. That was a loose shot by Jai. Jai needs to be tight with his technique. Not be half-hearted in your shot selection, especially when you're playing the moving ball. Yes, giving a good, decent account of himself with the new ball here, Raghav Rathi. Yes, indeed, a decent start. An interesting start for Raghav with the new ball in this tournament.
Nicely played with soft hands. Daddy just firing that throw in. One bounce to the wicket keeper. Yeah, the best part about Raghav is that he's consistently bowling in that corridor of uncertainty. He's striking a good line and length on and around that off stump. He's making the batsman play. That really should be the primary job of any new ball bowler, to try and make the batter play at all times. Do not waste the new ball. The first thing, go all out, try and go for the wickets is what any captain will advise his new ball bowler. Bowl all out, go for the wickets. Yes, it's going to be Devli to continue from the in-orbit end. The early over, the man posted at deep gully, got into a good position to take that catch, but unfortunately the ball popping out of his hands. Anyways, the score at the end of 3 overs now reads 17 for 1. A big thank you to all our sponsors, Jensen LED Lights, Hex, Gajjar Group, Shakti Corporation, Pari Group, Body First, Sejal Realty, Edelweiss, Zig Sports Studio, Dot Shot. That was bowled faster through the air, almost in the block hole. Nicely dug away by Krish. The ball running away towards that wicket, mid-wicket region. That single easily taken, takes the score to 18 for 1. इस वक्त ये दोनों ही बल्लेबाजों के जहन में यही चीज होगी कि एक अच्छी साझेदारी को यहाँ पर प्रस्तापित करे, एक अच्छा फाउंडेशन ले करे, ताकि जो आने वाला जो मिडल ऑर्डर है वो विकेट पे जब आए तभी अच्छी स्थिति हो, खुलकर खेले, नेचुरल गेम खेले और अपनी टीम को एक अच्छे लक्ष्य तक ले जाए. तो इस वक्त एक अच्छी साझेदारी का प्रस्तापित करना यही मुख्य हेतु होगा ये दोनों ही बल्लेबाजों का, जय और कृष. अटकी हुई गेंद, बढ़िया टाइमिंग और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, बड़ी तेज रफ्तार से वो गेंद ट्रैवल कर रही थी. टाइमिंग तो बहुत ही बढ़िया थी लेकिन गैप नहीं निकाल पाए कृष, फलस्वरूप डॉट गेंद. थोड़ी सी खराब गेंद थी, भाग्यशाली रहे सुनील देवली के उस लूज गेंद पर एक भी रन न मिला. बढ़िया फील्डिंग. थोड़ी सी लूज गेंद, सही अंजाम तक पहुंचाया, डॉट शॉट बाउंड्री. इस मर्तबा कोई गलती नहीं की, थोड़ा सा कम पावर लगाया लेकिन थोड़ा सा देरी से खेला, फलस्वरूप गेंद गैप में गई, 4 रन मिले. रन संख्या बढ़कर अब 23 रनों पर जा पहुंची है. बिल्कुल नपीतुली गेंदबाजी करनी होगी, शिकंजा कसना होगा. सुनील देवली बहुत ही अनुभवी प्लेयर है, चैंपियन प्लेयर है, इस बात में कोई संदेह नहीं है. तो काफी दारोमदार उनके सक्षम कंधों पर है इस मैच में बतौर ऑलराउंडर. मच बेटर. लगातार यही एरिया में गेंदबाजी करनी होगी. चले, सुनील देवली के उस ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर.
Yes, Ayush Agarwal is here. A good prospect, looking good with the bat as well. Yes, he needs to bat regularly up the order. Ayush, you're looking good. And you need to go all out with your bowling. You cannot hold yourself back with the new ball or the semi-new ball you bowl with. You have to put in that 110% effort because you've got a good athletic physique. You've got the good height. So do not hold yourself back. Go out there and express yourself, Ayush. Make this season count for you. That is a message for the youngsters coming up the ranks. There are so many youngsters in this tournament who are making their debut and they are looking good. अपना वजूद प्रस्थापित करते हुए ये सभी युवा प्रतिभाशाली हुनरबाज players trying to make a name for themselves. Quite young and playing alongside all these champion players like Aniket, Rohan, Yash, Vedant, Daksh Agarwal, Aryan Patni, Sashwat. This will be a great learning experience for all these young cricketers. Yeah, just look at Raghav. He is keeping things simple. He's just sticking to his basics. He's making the ball land on the seam. He's bowling into that length areas outside the off stump or just on the off stump. He's bowling in that business area. He's not putting in that extra effort. He's just sticking to his basics. Yeah, a good interesting start here for Raghav. Yes, one good option now up on display here for Aniket and Sanjit as far as Team Gladiators is concerned. Walking into that shot, seeing the batsman stepping out, keeping the ball slightly away from him in the bargain, giving one extra run away. Takes the score to 26. Yes, good line and length and nicely played with soft hands. Just working that good ball away for a single. That really should be your strategy in a T20 game. Try and keep the strike rotating at all times. Singles can be the lifeline of even a T20 game. The key is to play with soft hands. Just put it into the gap and take that single and give the strike back to your partner. If you're able to, put those good deliveries away for singles and couples, it is such a good sign. That really will break the rhythm of the bowler if you keep the strike rotating. $27 for 1. Krish on strike. Yeah, his primary job is to drop anchor. Try and play out those 20 overs. Krish Subramaniam. At this time, getting that ball into the batsman. Yes, indeed, Raghav giving a good account of himself. He's been handed over that big responsibility of bowling with a new ball in this crucial situation, and he seems to be delivering the goods in a decent fashion. A good, interesting start with the new ball in this GSC 2020 for Raghav. The man on strike, Jay. Single easily taken. Two more balls to come in this over from Raghav, bowling from the infinity end. The man on strike. It's going to be Krish Subramaniam, having faced 13 balls already on to 16 runs. Good start here. Needs to capitalize on this good start, convert it into a solid performance. Solid performance.
And when I say a solid performance, it does mean at least a big 50, not a small 50. A solid performance means you carry your bat almost to the innings, and a solid big 50. A big 50 is something in the region of at least 65, 70 plus. Just stay at the wicket. The Mool Mantra, runs will automatically come in. There goes the customary routine clap exercise by team riders. Very well bowled. Good bowling. Yes, end of another tidy over from Raghav Rathi. This is what experience brings to the table. Team Gladiators were slightly worried as to who will bowl with the new ball, and one option was Raghav, but he seems to have delivered in such a good fashion. He's made good use of the new ball, landing the ball in the business areas, making the batters play at all times, asking questions of them with his probing line and length. Raghav has bowled his 3 overs for just 17 runs. That economy 5.67 and over, not bad. But he'd have been more than happy to, have 1 or 2 wickets in the wicket column. A dropped catch of his over. 29 for 1, 29. Very nicely bowled. Sunil Devli to continue from the in-orbit end. He's into his 3rd over. Nicely cut away, a man stationed in the deep. That was a good free flow off the bat from Jay. That will give him much confidence. Yes, a warm welcome to Amarkant Jain, Urf Happy. And yes, he will be conducting the mid-innings analysis session. Yes, so well bowled. Yes, he's found his rhythm. This is indeed a probing line and length. Yeah, back to the original self. This is the Sunil Devli that we all know. This is match number 20. Nicely punched away. A man at sweeper point. We'll have to be happy with just a single. That single takes the score to 31. One more ball to come in this tight over from Sunil Devli. Much better in this over. Indeed, bowling a tight spell now. Very well bowled. Yes, he's really looked his original self in this over. A very good over comes to an end. The score at the end of 6 overs is 31 for 1. Yes, in the 19 matches that we've played so far, 5,600 runs have been scored. 230 wickets have been taken.
4,280 balls have been bowled. 531 extras have been given away in this tournament so far. 498 boundaries before this match, mind you. 155 sixes, 24 half centuries, and just a lone century from the blade of Rohan Gajjar. We have witnessed 17 50 plus partnerships, and mind you, 700 plus partnerships. There have been 8 maiden overs in this tournament. Yes, this is most surprising and shocking. 1,839 dot balls in this tournament. 1,839 dot balls. Only 21 catches being taken in 19 matches. Only 21 catches so far. Not a single stumping. So this were some interesting statistics. Not a single stumping and just 21 catches off in 19 matches. Shocking. 1,839 dot balls. That really gives the story away. (31 for 1) at the end of 6 overs. Raghav to continue. Bowling his final over. There was room on offer. Yes, not able to pack a punch. Just giving it the direction. Nicely fielded by Aniket. That single takes the score to 32. Jai on strike now. Rathi at the top of his mark, bowling his final over of the spell. It's for the first time that has been handed over the new ball, and yes, he's been impressive. He's been more than decent so far. Yes, having won the toss, Sanjit Srivastava opting to bowl first. The match nicely poised. Even Stevens. A slow and steady start here for both the teams. Quite some cricket left to be played tonight. This is a big game here for Team Riders more than Team Gladiators. On the rise and brilliantly taken. That's the Jensen LED lights wicket. Yes, a soft dismissal for Krish Subramaniam, playing it through the line on the rise, but could not get the desired elevation. So that should have been played along the ground, maybe. Always a huge risk when you play it in the air. Yes, getting his man a much deserved wicket for Rathi. That's a Jensen LED lights wicket. Surendra Bhai Gadia is not happy with that wicket, but he'll have to take it in his stride. And yes, Satish Agarwal ji ka hum swagat karenge. Good evening, sir. In comes the captain, Yash Gadia, on screen for you guys. Yash Gadia. There you go, Yash. Knocking on the doors of the big Mumbai League cricket. Such a great talent, very good experience, good head over his shoulders. The talent is there. He really applies himself. Yes, indeed, a good cricketing career awaits this super talented youngster. Yash Gadia, wishing him the very best. Yes, that much deserved wicket here for Raghav. That will make him feel good.
He's bowled well. So that wicket will do justice to the kind of bowling performance that he has dished out tonight. That one wicket in the column, wickets column will make him feel good. Raghav to bowl to the left-handed batsman. Yash. 33 for 2. Length delivery into the rib cage of Yash. Nicely worked away. Standing tall on that one. A confident looking start here for Yash. 2 more balls to come in Rathi's spell. So far having given away 20 runs and has picked up a wicket. Not happy with that decision, but yes, it's a wide. A premeditated shot from Jay. Almost walked into that shot. On the rise, we'll have to wait and watch. That's a soft dismissal. He was looking circumspect. That's a Jensen LED lights wicket. Nicely taken by Sanjit Srivastava. No, not Sanjit. It's who's the fielder? In comes the wicketkeeper batsman Tibrewala for Team Riders. In the earlier match, he was in good form. Yes, Jay was looking slightly tentative tonight. A few poking shots, not his usual confident self. Jay paying the price. Soft dismissal for both the batsmen. Krish and Yash getting out after getting set. Not to be done, not to be done. Especially from somebody like Krish Subramaniam. That should have been played all along the ground. Yes, a nice catch taken by Nishil. He judged it to a perfection. Wasn't that easy catch. He made it look easy because he judged the flight of the ball to perfection, Nishil. Very good delivery to a new batsman. Very intelligently bowled. Getting some good shape, keeping the ball right up to the batsman. End of a terrific spell from Rathi. The new man in Raghav Tibrewala. Such depth in the lineup of Team Riders. They are the youngest team in the championship. And yes, maybe the most talented as well. They have been on a roll. They have got that winning momentum with them.
after the break of 5 days, a mini vacation that we've had at the GSC 2020. It will be a challenge to get their form back. They'll have to reorient themselves as a team and once again bounce back. So they'll have to spend some time at the wicket to get the rhythm back. Looks like it's going to be Gopal Butra to bowl from the far end. That is the inhabitant. What a talent, a blockbuster package. Yes, Sanjit has handed over the ball to Gopal Butra. 7 ओवर के बाद 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर वो जो विकेट्स क्रिश और जय की जो 2 विकेट्स गिरी है, उन विकेटों के चलते अब पलटा भारी यहां पर टीम ग्लैडिएटर्स का. काफी क्रिकेट खेलना बाकी है, लेकिन अब थोड़ा सा मोमेंटम गेन करती हुई टीम ग्लैडिएटर्स शिकंजा कसती हुई एक नव चेतना के साथ अब इस इनिंग्स में आगे बढ़ती हुई टीम ग्लैडिएटर्स एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हुआ, और ये ऊर्जा उनके सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज में इस वक्त नजर आती हुई. अच्छा अप्रोच, अच्छा क्रिकेट खेलती हुई टीम ग्लैडिएटर्स. अब काफी कुछ टीम राइडर्स के लिए इस जोड़ी पर निर्भर है, यश और राघव टिबरेवाला पर. एक अच्छी शुरुआत, ज्यादातर गेंदों को फास्ट करते हैं और हर ओवर में कम से कम 1 या 2 फ्लाइटेड गेंद भी करते हैं. फ्लैटर ट्रेजेक्टरी पंच किया यश ने. स्वीपर पॉइंट पर वहां पर फील्डर मौजूद. 1 रन मुकम्मल हुआ. रन संख्या बढ़कर अब 36 रनों पर जा पहुंची है. इसके पहले के मैच में राघव टिबरेवाला काफी अच्छे फॉर्म में थे, एक बहुत ही पर्पसफुल इनिंग्स खेली थी. उसी तरह से आज के शाम थोड़ा सा वक्त शुरुआत में बिताना होगा विकेट पर, साथ निभाना होगा यश गाड़िया का. गेंदबाजी को थोड़ा सा मेरिट पर ट्रीट करना होगा. अगले 2 या 3 ओवर्स का थोड़ा सा सेट होना होगा और फिर अपनी नेचुरल गेम को पेश करना होगा. यही मूल मंत्र होना चाहिए इस वक्त राघव के लिए. विकेट पे डटे रहना है. एक दिलचस्प शुरुआत गोपाल के लिए. बहुत ही एक बड़ा नाम है इस टीम ग्लैडिएटर्स का, एक आधार स्तंभ प्लेयर, दिग्गज प्लेयर. फ्लाइट दी थी वहां पर, अच्छी गेंद, आमंत्रित किया था बल्लेबाज को कि ड्राइव शॉट खेले, जाल बिछाया था. काफी अंदर की तरफ वो गेंद आई, थोड़ा सा यस नो और ये डायरेक्ट हिट है और सीधे सीधा थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया है. जेनसन एलईडी लाइट्स throwing light on the decision. The DRS setup sponsored by Jensen LED Lights. Over to Kiran Purandare. Yeah, it's out. Bells dislodge when batsman was out of his ground. Jensen LED Lights wicket. Yash Gadia back in the hut. Yes, थोड़ा सा हेजिटेशन और अपना विकेट खोया. 3 विकेट्स लगातार गिरे हैं और इस इवेंट के चलते looking down the barrel of the gun here, team riders, and definitely in the driver's seat at this stage it is team Gladiators. That was such a good throw from Baba. Daksh Agarwal is here, Kingshuk is here, 2 star players, yes, amongst the Fab 7 of the GSC, Daksh and Kingshuk. A warm welcome. Yes, Vivek Narsaria is also here. Yes,
Tomorrow's match, Super Kings versus Warriors, 6:30 p.m. That wicket of Yash Kadia was such a big wicket, a big blow here. Yes, Vikas Linga on strike. Manu Gautam is also warming up. Maybe he will be maybe he'll be invited to bowl the next over. Yes, making things happen here, Sanjit Srivastava. Team Gladiators, having won the toss, decided to field first, and at this stage, one really must confess that it's been the right decision so far. They are making things happen. They are not on the back foot. They are taking the initiative. They are making things happen. They have nothing to lose, isn't it? That's the added advantage for Team Gladiators. Very, very wide-ish outside the off stump. Quite the right call. With that extra run, the score now on to 37. 37 for the loss of 4 wickets. Yes, the top order of riders back in the hut, including Yash Gadia. Both these guys, Vikas Linga and Tibrewala, will have to get all their experience into play. This will be a big, big ask here for both these guys. They really need to deliver the goods. This will be a test of character for Vikas Linga and Raghav Tibrewala. They need to bail the team out of trouble. They need to take their team towards a respectable tally, say of something at least in the region of 160, 165 plus. It's going to be Sanjit Srivastava to bowl from the in-orbit infinity end. Yes, Sanjit Srivastava can be such a huge proposition with the variations that he has at his disposal. Yes, he's got the arsenal to be the striking bowler, the death specialist, Sanjit, to bowl from the infinity end. Down the leg side, that will be a dot shot boundary. Yes, very well bowled. That was slightly short of length. Yes, must have hit one of those cracks.
getting Vikas Linga into an awkward position, but nicely fended away in spite of being in an awkward position, playing with soft hands. Sanjit Srivastava, yes, he's led his team quite nicely tonight. Change in pace, हवा यात्रा पर गेंद निकली है, निशिल बढ़िया कैच और ये जेसन एलईडी लाइट्स विकेट प्राप्त होता हुआ, हवा यात्रा पर गेंद गई थी. That is the wicket-keeper batsman Raghav Tibrewala on his way back to the hut. Not such a good shot here. Shot selection is the key here. Jensen LED lights wicket. What a fantastic catch taken by Nishil. Two good catches. The ball was swirling in the air और ऐसे हालात में इस तरह के कैच को जज करके इतनी सटीक तरीके से कैच को लपकना आसान बात नहीं है अंडर प्रेशर. ये टीम ग्लैडिएटर्स आज बिल्कुल पर्पसफुल नजर आती हुई. ऐसे का देखिए उनका ये पूरी एक टीम एफर्ट है आज. अनिकेत और संजीत श्रीवास्तव, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अपने टीम की जो थिंक टैंक है उस थिंक टैंक के दो दिग्गज आधार स्तंभ अनिकेत कवाड़े और संजीत श्रीवास्तव, गोपाल भुतड़ा भी है, निशिल भी है. Who's the new man? Batsman? Batsman name? Jalan. The new man in? Yes, his speech. कुलदीप पाजी सर का मैं स्वागत करता हूं. कुलदीप सर. Bowling with good pace, getting some good purchase off the wicket, and courtesy that wicket, Sanjit Srivastava definitely bowling with his tail up. They've made things happen tonight. That's the best part about the approach and attitude of Team Gladiators here. Yes, sir, because they had nothing to lose in this match, in this tournament. Now, the only way that Team Gladiators can go is go up. They can only rise from the ashes, isn't it? Playing for pride, they will be looking to win all the 3 round robin league matches, including this one. Yes, sir, definitely in a tight situation here, Team Riders. They need to find a way to wriggle out of this situation. के सहारे मोड़ दिया है डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, बड़ी आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल किया और केवल 2 ही रनों के साथ समाधान प्राप्त करना होगा. 9 ओवर के बाद 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर. यस, हमारे अंपायर से दर्शाते हुए कि इस ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल होगा और 9वें ओवर में ही आधी टीम पेविलियन का रुख कर चुकी है. ये थोड़ा सा चिंता का विषय है. तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर संघर्ष करते हुए इस मैच में बने रहना होगा और इस मैच में बने रहने के लिए कम से कम 140 से 150 रनों का लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर किसी भी हाल में खड़ा करना अब अनिवार्य हो चुका है. पूरा दारोमदार अब विकास और धनराज जलान के कंधों पर. अपने स्पेल को बरकरार रखेंगे गोपाल बुतड़ा. 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 5 जेनसन एलईडी लाइट्स विकेट्स गिर चुकी है. इस मैच के टॉस को जीता था ग्लैडिएटर्स ने और अब तक काफी अच्छा निर्णय साबित होता हुआ संजीत श्रीवास्तव के लिए. they are playing like a well oiled machinery. इस अच्छे कार्य को शुरू किया था राठी ने, बहुत ही बढ़िया स्पेल किया था नई गेंद के साथ
और जो राठी के आखिरी ओवर में जो 2 विकेट्स राठी को मिले वो टर्निंग पॉइंट था, जिसके चलते एक बहुत ही अनुकूल स्थिति में इस वक्त टीम ग्लैडिएटर्स, राठी के जो लास्ट ओवर में 2 विकेट्स उन्हें मिले वो टर्निंग पॉइंट था अब तक का। चैंपियन टीम वही होती है जो हर किस्म की प्रतिकूल परिस्थिति में भी सकारात्मक क्रिकेट खेलते हुए अपनी टीम को अनुकूल स्थिति में ले जाने की क्षमता रखती है। वही टीम चैंपियन टीम कहलाने के लायक होती है। और यही तो फर्क होता है एक चैंपियन टीम और एक साधारण टीम के बीच। When the going gets tough, the tough get going। और बिग मैच प्लेयर वही होता है जो बड़े मंच पे इस तरह के प्रेशर सिचुएशन में अपना टैलेंट दर्शाए, बड़ा परफॉर्मेंस करे। बहुत ही बढ़िया शॉट, अप पिछली खेल, ऑन द राइज थ्रू द लाइन, डॉट शॉट चौका, जस्ट अ फ्लिक ऑफ द रिस्ट। ज्यादा बैकलिफ्ट नहीं थी, अगर आपको एक्शन रिप्ले देखने को मिले तो बैकलिफ्ट ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी, लेकिन वो जो रिस्ट वर्क किया बहुत ही बढ़िया टाइमिंग। देखिए बस कोई बैकलिफ्ट नहीं था, जो इनिशियली बैट को ऊपर रखा था बस वही दर्शाया और एन वक्त पर अपने कलाई के सारे थ्रू द लाइन। That was fired in, first one nicely worked away। ड्रिंक्स के पहले की 2 गेंदबाजी बाकी है। (53 for 5). Two balls to go before the drinks interval. It's been a fantastic performance by Team Gladiators. The first session tonight has indeed belonged to Team Gladiators in a big way. Looking down the barrel of the gun in dire straits. Yes, it's a huge ask here for Team Riders now to go past that 150-run mark. They are a champion team. They have got good depth in their lineup. So this will be a test of character for Team Riders tonight. They have to find a way out to get out of this situation. Then वापसी का रास्ता खोजना होगा। This is a big night here for Team Riders, indeed. चलिए ओवर की समाप्ति, 10 ओवर के बाद 53 रन, 5 विकेट के नुकसान पर इट इज ड्रिंक्स टाइम। और यस, हियर कम्स जुगराज। शॉट सिलेक्शन इज द की। 3 सॉफ्ट डिसमिसल्स हमने देखे, क्रिश सुब्रमण्यम का, जय केडिया का, राघव का। 3 मैच विनर्स है, ये तीनों ही अपने दिन मैच विनर्स साबित हो सकते हैं। ये बड़ा मैच है, हम सभी जानते हैं कि ये मैच राइडर्स के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। तो मेंटली ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए। यू गॉट टू बी prepared well mentally for this kind of a big match. And tonight Team Gladiators seems to be better prepared. Yeah, we've got some cricket still left to be played. Can Team Riders find a way back in the match is the big question here. They've got a fantastic lineup, bowling lineup. So to give a chance to that fantastic lineup, the bare minimum that Team Riders will want to defend is at least
141 45, the bare minimum. That wicket of Yash courtesy run out was the big blow. Yes, slightly more disappointed with Raghav Tibrewala. He was looking so good in the earlier match. He's lost so much of weight. He's looking much fitter. He's looking eager for runs. One mistake, one lapse in concentration, and you are off the center wicket. You got to stay at the center wicket for as long as you can to showcase your talent. Stay at the wicket. Jai Kedia needs to once again reaffirm to the Goregaon Sports Club. Yes, I am one of the key players at the Goregaon Sports Club. He needs to establish it in this season. So he cannot let this kind of an opportunity go by. He was looking tentative right through his brief stay at the wicket. Jay was looking slightly circumspect. Yeah, this is what a 5-day break can do to your psyche. You need to reorient yourself. You get to recollect your thoughts, play as a cohesive unit. या इस बीच हम सभी के लोकप्रिय विधायक असलम भाई का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ. गुड इवनिंग सर. और हमारे सम्माननीय भामरा जी का भी मैं स्वागत करता हूँ. आनंद मिश्रा जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ. गुड इवनिंग मिश्रा जी. सब अनिकेत कवाड़े गेंदबाजी करने के लिए उतरे हैं. द बिग डैडी ऑफ द गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब. एंड यस, जिस तरह से जो सभी सीनियर क्रिकेटर्स है, दक्ष है, आर्यन है, वेदांत है, यश है, जिस तरह से रिस्पेक्ट दर्शाते हैं अनिकेत के लिए, दैट रियली सेज इट ऑल. इससे ज्यादा कुछ भी डैडी के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है. He commands huge respect at the Goregaon Sports Club. A champion player. And this year, yes, Vikram Panjwani has been the man to watch out for. He's looking to break into that big league of the Goregaon Sports Club. He's looked so determined. He's looking so focused. Nicely timed. That will be a dot shot boundary. That is Jalan at his very best. Room on offer. Slightly loose delivery gets the treatment that it deserved. With that dot shot boundary, the score now on to 57. Yes, Vikram Panjwani is looking to shoulder the burden of the whole team onto himself, especially when the team is looking down the barrel of the gun. Every time when his team has been in a tight position in this tournament, it is Vikram Panjwani who's put his hand up, and he's really managed to bail his team out of trouble on most occasions. So yes, Vikram Panjwani definitely the player to watch out for. $57 for 5. 2 more balls to come in this over from Baba, bowling from the infinity end.
संजीत श्रीवास्तव गेंदबाजी करेंगे इन ऑर्बिट एंड की तरफ से। 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी साझेदारी इस वक्त पनपती हुई विकास लिंगा और धनराज जलान के बीच। दोनों ही विकेट पे डटे हुए हैं और अगले कम से कम 4 ओवर्स तक इसी तरह से ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलना होगा। कम से कम अगले 4 से 5 ओवर्स तक कोई विकेट न गिरे, इस बात का ध्यान रखना होगा, ये खबरदारी का इख्तियार करना होगा। जलान और विकास लिंगा ने थोड़े से सेट हो चुके हैं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे। फाइट करना होगा, टीम को वापसी दिलानी होगी। That was bowled slow through the air. Nicely timed dot shot boundary it is. Just look at the timing. Once again, warm welcome to Kuldeep Paji sir. Ball flying away off the outer edge of Linga's bat. Yes, so with that single, the score now on to 64. That current run rate is not that bad. Looking at the wickets column, it is currently 5.65. Not bad. It's time for some resurrection here for team Riders. Both these batsmen need to stay put at the wicket. जब कभी लूज गेंद मिले तब उस लूज गेंद को सही तरीके से बड़े रन्स के लिए खेलना है. Have to wait for that loose delivery और अच्छी गेंदों को वर्क करना है, गैप में सिंगल्स लेने हैं, स्ट्राइक रोटेट करना है. ये स्लोअर गेंद, कटर गेंद संजीत श्रीवास्तव के लिए सबसे उम्दा हथियार है. बहुत सारे वेरिएशंस है संजीत के पास और इस तरह के टाइट सिचुएशन में, इतने बड़े मैच में बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करते हुए संजीत. थोड़ी सी मिस फील्डिंग फलस्वरूप एक एक्स्ट्रा रन मिला. स्मार्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स. अच्छा क्रिकेट खेलते हुए विकास लिंगा और जलान. विकास लिंगा देखिए, ही हैज पुट अ प्राइस ऑन हिज विकेट. ज्यादातर हम विकास लिंगा को आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, आकर तुरंत ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन आज जब वक्त का तकाजा यही कहता है कि विकेट पे डटे रहो विकास, तब अपनी नेचुरल गेम से परे होकर अच्छा क्रिकेट खेलते हुए, फाइटिंग क्रिकेट खेलते हुए विकास लिंगा. Yes, weathering the storm here. Yes, this is fighting cricket from Riders. They need to continue in the same vein. अगले 3-4 ओवर्स तक इसी मोमेंटम में खेलना है, इसी तरह से खेलते रहना है अगले 4-5 ओवर्स तक. लो फुल टॉस, स्लो वन ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद, केवल एक ही रन प्राप्त हुआ. ओवर की समाप्ति 12 ओवर के बाद 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर.
एक अच्छा ओवर टीम राइडर्स के लिए। यस, चलो अब तो मैसेज लगातार टीम राइडर्स के ड्रेसिंग रूम में से बिल्कुल आता रहेगा। आज ये अग्नि परीक्षा है टीम राइडर्स के लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मैच है। आखिरी गेंद तक फाइट करना होगा, इस मैच को किसी भी तरह से जीतना होगा टीम राइडर्स ने। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था टॉस के वक्त कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टीम ग्लैडिएटर्स अगर अपनी रंगत में आकर उजागर होकर क्रिकेट खेलती हो तो बिल्कुल एक बड़ी चुनौती पेश करेगी, और यही होता हुआ इस स्थिति में बिल्कुल ये कहना होगा कि काफी हद तक पलड़ा भारी है टीम ग्लैडिएटर्स का। लेकिन अच्छी साझेदारी पनपती हुई जिसके चलते एक वापसी नजर आती हुई टीम राइडर्स के लिए। काफी क्रिकेट खेलना बाकी है, इस वक्त कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। वाइड गेंद, 2 रन्स मिलेंगे, 1+1। रन संख्या 70 रनों पर जा पहुंची है। करंट रन रेट थोड़ी सी अब बढ़कर 5.83। थोड़ी सी दिशा से लगातार भटकते हुए अनिकेत। बाबा हम सभी जानते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस थे, ज्यादातर बिल्कुल सही एरिया में गेंद को लैंड कराते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा मूवमेंट मिलती हुई अच्छा क्रिकेट। यस, सराहना करना होगा जिस तरह से टीम राइडर्स वापसी करने की कोशिश करती हुई। चलिए, डायरेक्ट हिट एंड रेफर किया है थर्ड अंपायर की तरफ। जेनसन एलईडी लाइट्स थ्रोइंग लाइट ऑन द डिसीजन। डीआरएस सेटअप को स्पॉन्सर किया है इस सीजन में पहली बार डीआरएस सेटअप जेनसन एलईडी लाइट्स ने। ओवर टू पुरंदरे, द मैन इन द हॉट सीट, थर्ड अंपायर। Yes, the call from the umpire, third umpire, is not out, and yes, so we continue playing. 74 for 5. He's playing so well, Vikas Linga, and nicely being complimented by Dhanraj, who's looking equally good. That's the way to go. Keep continuing playing in the same vein. मैं जो हमेशा कहता हूं कि अच्छी गेंदों को हल्के हाथों से खेलो, गैप में खेलो, स्ट्राइक को रोटेट करो, यही होता हुआ। और जब आप इस तरह से अच्छी गेंदों को भी सिंगल्स लेते हो तो गेंदबाज का जो रिदम होता है वो अपसेट हो जाता है, और फिर वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्राई करता है, और you get some loose deliveries in the bargain. That is the time when you attack those loose deliveries. One more ball to come in this over from Baba.
76 for 5. On the rise, getting that big foot forward, playing in copybook style. End of the 13th over, 77 for 5. I've never seen Vikas Linga being so purposeful in the last 2 seasons. For the first time, I am watching Vikas Linga playing some fighting cricket, orthodox cricket. He's playing to his potential. This is the Vikas Linga that we all have come to know. More often than not, we have seen Vikas Linga come in and play the big shots here and there and getting out in quick time, but not tonight. When the team wants a good fighting innings from Vikas Linga, he's put his hand up and nicely complimented by Dhanraj. In comes one of the most experienced bowlers, one of the marquee players for the 45+ brand of cricket. In comes Manu Gautam from the in-orbit end. The man on strike, Vikas Linga. Vikas is on to 20 runs of 17 balls with the help of 2 dot shot boundaries. And Dhanraj is already on to 17 of 14 balls of with the help of 2 boundaries. So such a good purposeful partnership here. This partnership, if it continues in the same vein for the next 3-4 overs, I am sure that Team Riders is going to make a comeback. Manu Gautam to bowl from the far end. Such a good cricket match being played out here. This is a big game, Team Riders versus Team Gladiators. Gladiators having won the toss, straight away deciding to bowl first and in a good situation. But yes, Team Riders also fighting back, showing some good stomach for fight. He can be a very miserly bowler, Manu Gautam. His USP is the military line and length that he bowls. Match after match, season after season, he will keep bowling in the right areas. Superbly bowled, almost had his man there. Good bowling. This is the chance that Manu Gautam was looking forward to. He's not got a chance to bowl in this tournament, but now that he's been given the ball, he will try and make the most out of it. That single takes the score to 79. One more ball to come in this over from Manu. 80 for 5 it is. Dhanraj on strike. Sitting right behind the ball, making good use of the depth of the crease, working it away towards the deepish mid-wicket region. 81 for 5 at the end of 14 overs. The current run rate is 5.79. If they can manage to get that current run rate to something in the region of slightly even 7+, I think that will be a fighting score. At least 7+.
as they go towards the end of the innings by the 19th or the 20th over. Yes, we've had some fantastic news as far as sports is concerned. The legendary P.T. Usha has been elected the president of the Indian Olympic Association unopposed. A great achievement, and it is wonderful to see a legendary sports personality in that seat as an administrator. This is indeed great news. A sports personality being in that hot seat, P.T. Usha. And yes, another piece of good news that India, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, is trying to bid for that 2034 Olympics. Yes, Gujarat is going to be bidding for that 2034 Olympics. A sports minister, Union Sports Minister Anurag Thakurji is doing his best, setting up a great infrastructure in Ahmedabad. We've got the biggest cricket stadium, which also has a sports complex. Yeah, the ground in the periphery of that huge stadium, Narendra Modi Stadium, also a lot of infrastructure being set up. 82 for 5. Yeah, it will be great for India as a sports country if we get to host the 2034 Olympics. We are trying our best to get the Olympics to India. That will be the ultimate booster. Room on offer. A free flow of the bat, but not so well timed. Only a single added. That single takes the score to 84. 3 more balls to come in this over from Baba. Managing to keep things reasonably tight here. All credit to this purposeful and intentful determination being exhibited by Team Gladiators. White shot has managed to put it away, ample time. That will be a dot shot boundary. Not so well timed, but the ball had enough gas on it to go past the boundary. 88 for 5. For 5. This is match number 20 of the GSC 2020. A total of 32 matches to be played. Nicely timed. That will have to be the shot of the evening. Dot shot boundary off the blade of Dhanraj. Dhanraj is starting to look so good. 93 at the end of 15 overs. Yes, we've had a fantastic record yesterday. Ruturaj Gaikwad of Maharashtra in the Vijay Hazare Trophy came up with a blazing double century. 7 sixers in 1 over in List A cricket for the first time. Kuldeep sir, for the first time in List A cricket, anybody has hit 7 sixers in 1 over. नो बॉल के ऊपर भी छक्का लगाया था. पहले 50 काफी गेंद ली, फिर और थोड़ी सी कम गेंद ली 100 करने के लिए.
150 करने के लिए और ज्यादा कम गेंदें ली और 200 रन के लिए तो बिल्कुल केवल चंद गेंदों का इस्तेमाल किया ऋतुराज गायकवाड़ ने अगेंस्ट उत्तर प्रदेश। विजय हजारे का यह मैच एक बहुत ही बड़ा विक्रम स्थापित किया ऋतुराज गायकवाड़ ने, 7 सिक्सर्स इन एन ओवर, माइंड बॉगलिंग। यस, उन्होंने फिर से एक बार अपने इंडियन कैप के लिए बड़ा दावा किया है। 3-4 मैचेस मिस किए थे बिकॉज ऑफ एन इंजरी, वापसी की शानदार। चलिए इस मैच की तरफ रुख करते हैं। गेंदबाजी का भार संभाले हुए अनुभवी मनु गौतम, स्ट्राइक पर विकास। गेंद, ये विकास लिंगा का ये अप्रोच बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और जब आप इस एज में, जब आप आपके करियर के इस मोड़ पे हो, इस तरह से विपरीत परिस्थिति को मात देकर खेलना, अपने नेचुरल गेम को साइड में रखना, फाइटिंग क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी बात है। द फीफा वर्ल्ड कप का भी नशा सर चढ़कर बोलता हुआ, द बिगेस्ट स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल इन द वर्ल्ड कतार में इस वक्त मार्गस्थ, द फीफा वर्ल्ड कप। कितने अपसेट्स हमने देखे इनिशियली में, अब स्लोली फिर से एक बार जो चैंपियन टीम्स है वो बिल्कुल अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेलते हुए, this will be the final World Cup for players like definitely this will be the last World Cup for Messi, last World Cup for Ronaldo. That victory by Saudi Arabia against Argentina. Every player. Yes, warm welcome to my dear friend Rohit. कुलदीप सर, उस विक्ट्री के लिए सऊदी अरेबिया ने जो अर्जेंटीना पर विक्ट्री दर्ज कराए, नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर हुआ, हर प्लेयर को रोल्स रॉयस वहां पर गिफ्ट की गई, एंड व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। इस मिड इनिंग सेशन के लिए अमरकांत जैन के साथ होंगे दक्ष अग्रवाल, किंग शुक राय, विक्रम पंजवानी और तुषार उच्चिल, द 4 स्टॉलवर्ट प्लेयर्स। ये इंटरेस्टिंग सेशन होगा मिड इनिंग्स का, क्योंकि अब ये मैच की समाप्ति के बाद सभी टीम्स ने 5-5 लीग मैचेस खेले होंगे, यानी कि अब सीधे सीधा बिजनेस एंड ऑफ द GSC 2020 कल से शुरू होगा। फ्रॉम टुमारो इट विल इंडीड बी द बिजनेस एंड ऑफ दिस GSC 2020। टुडे इज मैच नंबर 20 और 2 सेमीफाइनल्स और ग्रैंड फिनाले को अगर छोड़े तो और 9 मैचेस आने बाकी है कल से। इस बीच झा साहब का मैं स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग मिस्टर झा। और वो अपसेट विक्ट्री, जर्मनी को हराया था जापान ने, वो भी एक बहुत ही अपसेट विक्ट्री थी। सोलह ओवर के बाद 97 रन 5 विकेट के नुकसान पर
रन रेट 6.06। पहली बार इस मैच में करंट रन रेट 6 के ऊपर गया है। थोड़ा सा 7 तक ले जाना चाहेंगे, 7 के उस पार। अनिकेत गेंदबाजी को बरकरार रखते हुए इन्फिनिटी एंड से स्ट्राइक पर है विकास। 30 रनों की एक बहुत ही बढ़िया फाइटिंग इनिंग्स अब तक खेली है। अब भी काफी क्रिकेट खेलना बाकी है इस इनिंग्स में। "24 balls to go, and I'm sure they would be looking to add at least another 38-40 runs." Well bowled, giving the batsman no room, cramping Vikas Linga, but yes, because he's so well set, got into a good position, nicely executed that shot. 98. It's been so impressive tonight, Dhanraj. A good inside out shot, nicely timed, a man in pursuit, that couple easily taken. Yes, making his intentions clear now. Dhanraj, if the ball is in his range, he will go after that shot. He'll go after the bowler. 100 runs up on the board for Team Riders. 100 up. Yes, on the guest panel for the mid-innings session, it's going to be Vikram Panjwani, Daksh Agarwal, Kingshuk Rai, and Tushar Uchil. And it's going to be our cricket expert, Amarkant Jain, to host that session. Nicely playing it into the gap. We'll have to wait and watch. That chase is in vain. Dot shot boundary. There was room on offer. And nicely dispatched away from side. That boundary takes the score to 104. Both these batters now on to 31. Vikas on to 31 of 26 balls and Dhanraj on to 31 of 27 balls. Both the batsmen complementing each other to a nicety, matching each other. This is a great partnership here. Superb partnership. And yes, he'll have to take that walk back. That is the Jensen LED lights wicket. He gets his man. You really cannot blame Dhanraj trying to go after that one. Can't really blame him, isn't it? A good innings comes to an end here. In comes the new man. Saurabh Lohia. Siddharth Shah. That was a nice catch. Wasn't easy. That ball was flying away. Good glove work. It's a good fighting innings comes to an end, and everybody welcoming Dhanraj amidst an applause. Saurabh Lohia on screen. There you go. Yes, Saurabh Lohia, one of the key bowlers. He is presently at the number 4 spot as far as the purple cap standings are concerned. Rahul Jha, 5 innings, 10 wickets at the top of the table. Monish Shah, team challengers, 5 matches, 8 wickets. Vedanta Gadia from challengers again, 5 matches, 7 wickets. Number 4 par hai Saurabh, team riders, 4 matches, 7 wickets. The fact that 3 bowlers from team challengers occupy the first 3 slots really is a testimony to the fact that this is indeed a good bowling team. And yes, happy, I'll give you a couple of good insights for your session.
17 ओवर के बाद 105 रन 6 विकेट के नुकसान पर रन रेट 6.18। आखिरी 18 गेंदानी बाकी। 140 के उस पार क्या ये टीम जा सकती है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह इस वक्त निर्मित होता हुआ। 140, जैसे मैंने पहले ही कहा था, बेयर मिनिमम 138 140। They cannot settle for anything less than 138 140. That is the bare minimum. किसी भी हाल में you got to put 140 runs on the board. Sanjit Srivastava to bowl now from the in-orbit end. Amarkant Jain, we've played 19 matches and 5,600 runs have been scored so far. Before this match, 230 wickets being taken. Starts with a wide. 531 extras being given away. 498 boundaries, 155 sixes, 24 half centuries, and just one century from Rohan. 1,839 dot balls. That is what you can look at, Happy. 1,839 dot balls in this tournament so far. That was the in cutter. Yes, though on the app it is showing no stumpings in this tournament, we have seen at least one stumping for sure. And that is confirmed by my scorer, Akash Singh. Yes, we've had one stumping, but it does not reflect on the app. Well bowled under pressure, dot shot boundary in the form of buys. Welcome runs. He will be cross with the wicketkeeper there, Sanjit Srivastava. Yes, a warm welcome to Rishi Kedia. 3 balls to go. 110. A total of 15 balls to come now. 15 legal deliveries to come in this innings of Team Riders. Can they reach the 138, 140 run mark? That was well bowled. Just look at that well-directed bouncer. Fortunately, he had the helmet on. That is why we have made it a rule that helmets need to be compulsorily put on. That was straight into his head. A very well-directed bouncer. If Team Riders has to reach even close to 140, it will be Vikas Linga who will have to take the lion's share of the strike.
Yes, Sushil Patil is also here. 45 plus cricket is going to start from the 5th of Jan 2023. The man of the series last year, Sushil Patil. Orange cap, number 1, Aryan Patni. Number 2, Sashwat. Number 3, Rohan Gajjar. Number 4, Sagar. Number 5, Vikram Panjwani. Good piece of fielding. Getting his body behind the ball as the second line of defense, Baba. That single takes the score to 112. Yeah, he's managed to keep things tight towards the dying stage of this innings of Team Riders, bowling such a good spell here. Fortunately for the batsman Saurabh Lohia, that ball falling in no man's land. That couple easily taken. With that couple, the score at the end of 18 overs now reads 114 for 6. 114 रन 6 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी 12 गेंद आने बाकी. Yes, just to let Team Gladiators know, Sanjit Srivastava, you got to bowl your 2 overs in 14 minutes. It's enough time, but you just need to keep an eye on the watch slightly. Yes, even if that 20th over gets started before the 100th minute, they are good enough. They are through. It's going to be Manu Gautam, so this will not be a problem because he just takes a couple of steps. 100 minutes are already done through. This is the buffering time that you have been presented. It's indeed the umpiring panel in this tournament so far. We are into match number 20. They have done such a good job. Not easy. It's a thankless job. Well struck. That will be a pari group 6. Just what the doctor ordered. Terrific shot. That will put pressure on Manu Gautam. हम सभी जानते हैं कि विकास लिंगा एक ऐसा प्लेयर है जो हर बंदिश को तोड़कर किसी भी स्थिति में आक्रामक क्रिकेट खेल सकता है. जबरदस्त बल्लेबाजी. आज के दिन का ये पहला पारी ग्रुप छक्का. विकास लिंगा जा पहुंचते हैं 38 रनों पर. क्या वो 50 रन कर सकेंगे, ये प्रश्न होगा. फाइटिंग हाफ सेंचुरी. व्हाट एन इनिंग्स, सुपर्ब इनिंग्स. माइंड यू, मैं गत 2-2.5 साल से यहाँ पर GSC पर हूँ. This is one of the best innings I have seen from Vikas. The very best. Fortune favoring the brave. Vikas is lucky to be at the wicket. This could maybe a case of 10 to 12 extra runs being added. And of all the people, Baba dropped that one. That was a seater. Nicely timed, punched away, straight to Sanjit. That single brings Vikas Linga back on strike. 3 more balls to go in this one. Will this be the big over? Vikas trying to target Manu Gautam. Trying to break the shackles here. Into the gap, away she goes. Good piece of work in the outfield. Only a single added.
123 for 6. 2 more to go in this penultimate over. A total of 8 legal deliveries left to be bowled here. With a cross bat, a man stationed in the deep will be happy with just a single, not even thinking of that second run. Vikas, quite the right thing to do. One more ball to go. One more ball to go. Vikas has got his calculators out. His arithmetic is just about correct. Good thinking. The last ball is going to be facing. This is the 19th over, 124 for 6. Warm welcome to Vivek Bhai Narsaria. He'll take the single and keep the strike to him. End of 19 overs, the scoreline reads 125 for 6. The final 6 balls, they will be eyeing at least 15 to 16 runs, at least 13 to 14 runs, bare minimum. If this team can go past that 138 runs mark, the bowlers will have something to defend at least. And mind you, they are a champion bowling lineup. And yes, maybe then we have a match on our hands. Yes, on our guest panel for the mid-innings session, it's going to be King Shukrai, Daksh Agarwal, Vikram Panchwani and Tushar Uchil. And yes, it will be a cricketing Pandit, Amarkant Jain to be the anchor. The final 6 balls, it's going to be Sanjit from the in-orbit end. The man on strike, Vikas on to 41 of 31 balls with the help of 3 boundaries and 1 6. This innings from Vikas Linga has given team riders a chance here. Into the gap, that second run is definitely going to be taken and it goes past the man there. Not such a good effort, dot shot boundary, welcome runs, 129 for 6. This is good fighting cricket. Vikas Linga on to 45. I'm sure that he's not too worried about that half century, but we all will be happy if he gets to half century. He will be looking to add at least another 12 to 14 runs in the next 5 balls. That boundary of the first ball will put Sanjit under some pressure. Change in pace, full toss one, nicely played. This is superb batting. Dot shot boundary. Good thought, but not so well executed by Sanjit. 133 and Vikas Linga on to 49. Yes, this is indeed the best knock from Vikas Linga over the last 2.5 years. Just the kind of innings that Vikas Linga wanted at this stage. Once again proving to the Goregaon Sports Club that he is indeed still right there. He's not going anywhere away. Trying to be slightly cheeky there. Trying to play it deftly, but no connection. The score remains stationary on 133. The final 3 balls to come here. This is definitely a mini comeback being staged by Team Riders. This is indeed a mini comeback to say the least. Yes, he gets to his 50 and is crossed over for that 1 extra run. A brilliant innings. What a fighting half century from the blade of the very experienced Vikas Linga. Not even a race of the bat. Quite the right thing to do. He knows his team is not still out of trouble. He's putting his head down. Good body language.
Final 2 balls, 135 for 6. Oh, that was in his range. This is the first false shot. This is the first shot that he's tried to play with a cross bat tonight. All the other shots have been played in the V with a straight bat. चलिए आखिरी गेंद आनी बाकी 135 रन 6 विकेट के नुकसान पर. और ये चलिए आसान सा कैच. जेनसन एलईडी लाइट्स विकेट पाया है आखिरी गेंद पर. इस मैच को जीतने के लिए टीम ग्लैडिएटर्स ने बनाने होंगे केवल 136 रन. एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि शायद टीम राइडर्स 115 से 120 रनों के उस पार भी नहीं जाएगी, लेकिन विकास लिंगा की जबरदस्त फाइटिंग बल्लेबाजी और जिस तरह से धनराज जलान ने उनका बखूबी साथ निभाया है, इस बात में अब कोई संदेह नहीं है कि टीम राइडर्स ने वाकई में इस मैच में एक मिनी कमबैक किया है और एक मौका दिया है अपने गेंदबाजों को कि अपने हुनर के चलते, अपने प्रतिभा को चलते इस टीम को इस क्रूशियल मैच में जीत हासिल कराए. यस, 136 runs to win the match of 120 balls. And yes, over to Amarkant Jain and his panel for the mid-innings break. Thank you. This is your host and host, Nishat Kora, signing off for the moment. कृपेश भाई का मैं स्वागत करता हूं. हेलो. फ्रेम ठीक है. Hi, good evening. This is match number 20, and today onwards, every team is looking from qualifiers perspective. All teams are supporting Gladiators today. We were all sitting in the Gladiators dugout, and I have with me 4 captains who are eyeing for that top 4 spot. And let's have the panel. In the panel, we have today captain of Chargers, Daksh Agarwal. We have captain of Gangsters, Kinshuk. We've got captain of Challengers, Vicky, who's on a roll. And of course, we've got captain of Super Kings, Tushar Uchil. Daksh, we'll start with you. At one point of time when the match started, it was looking at 48 for 5. Would you have imagined that it would go to 135 or so? Yes, with Vikas Bhaiya on the pitch, 140, not 140, but around 120, 125 was seen on the scoreboard. I think the bowlers did nothing wrong. It was just good quality cricket and those easy singles that were being taken by Dhanraj and Vikas Bhaiya, which helped them get to a total of 135.
Kinshuk, when they were 48 per 5, and somewhere they loosened the grip. They were really in a very tight situation, and some lose or maybe some decisions with the bowling attack because Devli still had 1 over to go. No, as Daksh said that they didn't bowl badly, but it was a good batting with Vikas and especially Dhanraj, who gave him a very good supporting role. And I guess I'm not surprised the way Vikas had played. I've seen him rescuing his team many times before also, and he did the same thing today itself. Fantastic. Vicky, we were sitting in the Gladiators dugout and we were debating as to what was then. Rahul had already predicted 140. Tushar predicted 130, so his prediction went right. But I guess you were what were your thoughts on this total? No, I believe it's a very good comeback from Riders. The way they started the first 10 overs totally belonged to Gladiators. The way they bowled, the energy they showed in the first 10 overs. But after 10 overs, they lost the plot a bit, and it was a good consolidating innings from Vikas and Dhanraj. They both really batted sensibly and batted with great maturity to take their team to 135. Very good knock by them, and I mean, the way Gladiators started their debutant Raghav Rathi, the way he bowled, he was brilliant, for his first game in GSEPL. So I somehow feel Gladiators should have kept them down by about 10-20 runs further. Tushar, the fielding of Team Gladiators was really, really up to the mark today. We saw two lovely, brilliant catches by Nishil, and others also chipped in very nicely. So I think easily they would have saved at least 20 odd runs or more. Well, yes. If you see, as Vicky said, the first 10 overs, Gladiators were totally in the game. But yes, I think in the last few overs, especially that catch of Vikas, which went down from Aniket, I think 10-15 runs could have been saved there by that catch. But see, it's cricket; it happens. I mean, every team has dropped chances whenever it has happened. But yeah, it's important to grab those opportunities because that is what in the end sums up who goes on to cross the line. So yeah, I think the fielding in the first 10 overs, yes, they were right up there. But yeah, in the last 10, I thought they fumbled a bit. But I think 135 we've seen in this tournament so far. Very few teams have struggled to chase that. But with the Gladiators side, I mean with Aniket, who's not clicked yet, if he can stay there for 20 overs, I think they can easily chase it down. One interesting thing, Tushar, was that even after the power play, we saw 5 fielders in the circle. Was it up to a plan or well, you can't say. I mean, we were thinking that they might have missed the trick there, but yeah, I mean, when Baba was bowling from this end, there was no fielder protecting the mid-wicket area. So I thought one fielder could have been there, but I don't know if it was a strategy or if it was a mistake from their end, but it cost them in that over. At least I think 8 runs came in that over. But they got a wicket of Dhanraj. So I think if that was a plan, I think it worked for them. But yes, I mean if you ask people from the outside, I think they would have said that that fielder should have been there, kept and protected that boundary. Vicky, good energy today from the Gladiators side. As you rightly pointed out, Raghav bowled a brilliant spell. Sunil Devli was really amazing with his quickies. I thought he should have bowled one missed over. He only bowled about 3 overs. Where did you think they loosened the grip? As a captain, if you were to assess this situation? No, as even we saw in the 15-16th over, 5 fielders inside the circle is not needed. In the last 5 overs in a T20, the batsmen are going to go for it. So having 5 fielders inside the circle didn't make sense at that time. And also, as you said, Sunil Devli was bowling very well in the opening spell. I thought they could have finished his quota there and then because he was doing well and the ball was swinging a bit for him. So I think Sunil Devli should have finished his 4 overs early on. He was keeping it tight. So these few things, bowling changes and fielding changes and particularly the batting effort, you shouldn't take away the credit from the batting effort from Vikas and Dhanraj. They both kept their cool and brought them back to a decent target. Overall, even 135, this target can be tricky. If Gladiators don't bat well, I think Riders can make a match out of this. Kinshuk,
you rightly pointed out the kind of game or the kind of batting which Vikas played. You already mentioned that you've seen it so many times that he's come at the hour, come at the man, and he really saves his team. Now coming back to the second half of the game, we've seen that good amount of dew has turned up, and the kind of bowling that Team Riders has, we've seen them really tighten the grip on the opposing side. What do you think? Will it be a close match or? As Vicky said that riders, they are 10-15 runs, they should have stopped them before. So I think it is going to matter in the second half, and especially the kind of bowling attack riders have. They have a very good bowling attack, and they have a very good fielding attack also. And the captain, they have Yash Gadia, he leads very well his team. And we have seen before also they have stopped they have 133 and 143. They have stopped the other teams. So I think it's going to be very difficult for Gladiator. But as Daksh also said, the Aniket needs to stay there. Only then they can make it, or else it is a 50-50 chance. Daksh rightly said that Aniket hasn't fired as yet. Some of the other batsmen has also not yet fired up. These totals of 135 odd are really tricky, especially on our ground. And with the kind of bowling lineup which the spin attack which Riders has, we've got Yadavji again coming in today. He missed the previous match, but he will be a deciding factor. What do you think so? I don't think 135 is a tricky target to chase. It is on the approaches of both the teams, how they approach the target and the target that has been set. If Riders come out firing, I think they'll probably make a match out of this and finish this within a score of less than 100. But yes, Yadav uncle's experience does come in. His experience will matter a lot with the way Yash has been bowling and with the way their fast bowlers in the name of Saurabh and Jaikar have been supporting. So I think it will be a good match. But yes, like Tushar Bhaiya said, not me, that Aniket Bhaiya's bat hasn't fired, and if that happens, then it could be some problem for Team Riders. You've played under the captaincy of Yash, and I'm a great admirer of his leadership as well, as pointed out by Kinshuk. What is so different in him as a leader? I think the most different thing is that he never lets you rest or go easy at any point of time. There were, I think, 40 for 5 or something, and he was constantly cheering his teammates to keep going, and that is what you want. If that captain is giving you, then the other players do support it. And he is a good thinking captain. He tries to ensure that all his plans that he's set up has been executed at the most perfect time. Tushar, it reminds me of one match in the previous season when Yash was bowling, and he had a plan set out for Baba. He had a very unorthodox field setup. There was a long off, very straighter long off, and there was a mid off also, and he got him there. So do you think, being a thinking cricketer that he's going to use the power play well? I think the power play will decide the fate of the match today. Well, it should, because he himself has bowled well in the power play, and he always takes the responsibility on himself if something goes wrong in the first 2 or 3 overs. Sorry. But yeah, I think with him at the helm of the affairs, I think if he can come into play in the first 6, and if he chips in with 1 or 2 wickets, especially with Aniket Kawade, I think that could be the game. So I think if Yash is, as you said, he's a thinking cricketer. He's a good captain. He's a good leader. He has a good head on his shoulders. So I think if he can do something up in the first 6, that will be the game for them. Because if they prolong that to the 10th or the 12th over, I think Gladiators will run away with the game. Vicky, you yourself are a very good leader. We've seen it on the field, and you take up that challenge. You take up that ownership. You've done it so many times. You've proven it. You've been there, done that. As a captain, how difficult it is for especially these are almost like a knockout stage. You have to win this game. With Gladiators, they have nothing to lose, but they have a point to prove. The kind of team that they have on paper, I think today they displayed some grit, and if it happens with the batting also, it'll make a difference. But what kind of pressure, or how do you handle pressure as a leader, as a captain? Of course, you have Rahul as a great support in you, who's always backing you. But
what goes into that mettle of that leader? I mean, pressure is something, that comes with each game. You can't take any game lightly in a tough competitive tournament like this. Like, even for Gladiators, they know they can't qualify, but they are playing with full intensity today, because you come out here to perform, you come out here to play in front of people, and you come out here to show where you belong. So, pressure. I feel if you don't take pressure as a cricketer, sometimes maybe you are not able to perform. So taking pressure is not bad. At the same time, you need to keep your cool and be focused in the game. I mean, the never give up attitude should always be there in your team, no matter what the situation is. Even if you're defending 100 or 110, you must never give up on your team and try till the last ball. Cricket is a funny game. Anything can happen, Even today, 2-3 early wickets in the power play and Riders will be back in the game. Gladiators have 2-3 great batsmen with them. If they don't fire, Riders is right there. So Aniket's role here, Sanjeet, Gopal Bhutra, all these people have to stand up here today. If they have to, get some pride back into this tournament and get 2 points for them and, have some kind of respect for the team. Daksh, you've been a great captain. I've played under you as well, and you also take that ownership. Especially when you have a few newcomers in your side, how do you back them up, and how do you, tell them, come on, it's okay? So, what is your mantra for, pulling the team up? I think they are newcomers for this tournament and not newcomers in the term of cricket itself. They've been wanting to play, they've been wanting to win. No one comes out and, tries to lose or make a match out of it. Everyone is there out there to win, be it any stage. Even if you're 6 matches losing out of the 6 matches, you have to win that one match because it comes on your pride. And that determination to keep going and to keep winning that game is what all the boys really know about. And no one's that young enough to not understand what a win is to a team. So I think that winning spirit just keeps every person's spirits high. Kinshuk, your take on the match. So, 135 to win, 120 balls. Both sides are evenly poised. We know the kind of batting side which Team Gladiators have. All of them are, I think they bat deep to almost about 7 or 8. And the kind of bowling that they've done, they should be really, really confident enough to go. As I said earlier, that it is not an easy total to chase, especially the kind of bowling attack Riders have and the captain they have. And they have already defended this well against challengers also. So it is not going to be easy for Gladiators. As they said before also that it is mostly dependent on Aniket. So they need to support him or somebody else to step up to chase this total. It just looks that it is 135, but it's not that easy, especially the fast bowlers they have and the fielding they have. They are not going to give any chances because they are at the position that they can go and qualify or they can lose. But the Gladiator that doesn't have anything to lose. So I think Riders will push their best and make a case for themselves. Kinshuk, we've seen the kind of grid that you have shown in various matches and all over the seasons. And this time you have a team which is a complete blend of fresh youngsters and, of course, very, very experienced players. So, you are in the middle, sandwiched in between. And how do you handle captaincy and leadership with regards to, having both kinds of, both the ends, where you have absolute freshers and you've got very, very experienced players? How do you handle the leadership? I think actually it is much easier for me compared to other captains because in my team, most of the players, they have been playing for a long time. So it becomes easy to handle them and just tell them to do the basic things, and especially don't take anything for granted. Because in cricket, anything if you take granted and you lose, just lose one good phase and you are out of the tournament. So actually it is easy to handle these people. Coming back to you, Tushar, your leadership, I've been fortunate to play under you as well, and the kind of leadership that you've had. Super Kings is also placed in a very, very tight spot. Almost every team is that. But you have a must-win game on both the situations. What are your plans for the upcoming plans for the match? Well, it's going to be all positive. We have to go out and play some aggressive and positive cricket. And that is, I think, what every team wants to do right now. We're in the business end of the tournament. We just want to go out there, play positive and, just hope that, of course, the result should come our way, but also hope that, some other results also go our way. But yeah, the intention is always clear to go out and, play some positive cricket and hopefully, then see what happens from there. One last question to our panel. Who wins today?
I feel I have a gut feeling that Gladiators will win this. Gladiators. Vicky? I think it's the first 6 overs which will decide the match. But if you ask me, 135, if they bat sensibly, it's a Gladiators game. Kinshuk? I would go with Riders. Even I'd like to go with Riders. Wow. So our experts have given a mixed judgment, a hung parliament of sort. So we've got 2 in favor of Riders and 2 in favor of Gladiators. Let's wait and watch. Let's wait and watch who wins. This is going to be a cracker of a match. I think it's going to be a 40th over finish. Thank you so much, experts. Yes, thank you to Happy and the panel of experts. That was interesting listening to the views. And yes, it's Amarkan Jain ready with that white lady in his hands to get started the second half. It's going to be the young umpire Yogesh Kamble to take that white ball away to get the second half started with. Yes, here we go. Yogesh Kamble. 136 to win off 120 balls with 10 wickets in hand. Not a mountain to climb, but yes, they will have to play some good cricket to get there, because Team Gladiators have been slightly up and down, and it's been a pretty ordinary outing for Team Gladiators so far. But tonight they have looked purposeful, no doubt about it. And yes, it goes without saying that if we can see the vintage Baba on exhibition, this match will soon be over before time, no doubt about it. On the other hand, if Saurabh Loya can come into his own tonight and provide that couple of quick breakthroughs, then Team Riders could very well sooner than later get into the driver's seat. This is a tough needle to thread, especially when you're chasing a smallish target. Just look at the history. Yeah, low-scoring matches have got that history of producing unexpected results. Yes, it's going to be Saurabh Loya to operate from the in-orbit end with the new ball. It's been a good season for him so far, this very first GSC 2020. Yes, a warm welcome to Outdoor Sports Committee Chairman, Mr. Karan Singh Walia. Team challengers at the #1 spot on the points table. Team Warriors #2, Gangsters #3, Blasters #4. Riders playing this match at #5, Chargers #6, Super Kings 7 and Gladiators at #8. Leaderboard, Orange Cap, Aryan Patni, #2, Sashwat, #3, Rohan Gajjar, #4, Sagar Uchil, #5, Vikram Panjwani, Purple Cap, Rahul Jha, #1, Monish #2, Vedant #3, Saurabh with the ball in his hands at #4 and Pratik at #5. Here we go, it's playtime. Baba on strike to give him company at the non-striker and Nishil Mittal. Straight away, a probing line and length in the business area. Right on the money, Saurabh Loya. A good start. Nicely fended away. So compact in defense, Aniket. And we have the privilege of watching the vintage Aniket Kawade in action tonight. Nicely timed, dot shot boundary. See, for a lesser batsman, that would have been a superb delivery, but not to somebody who's got that high standard set for him, not to somebody like Aniket. Even in spite of being in an awkward position, he somehow managed to put it into the gap. Nicely timed. What a shot. Not a bad delivery at all by Saurabh. Straight away, wicket keeping up close.
Raghav Tibrewala. Yes, quite a few icon players now on stage watching this proceedings. We've got superbly timed. This is the vintage Baba. Just what the doctor ordered. He will not let go those loose deliveries unpunished. हमारे साथ हमारे विधायक सम्माननीय श्री असलम भाई इस वक्त हमारे मंच को सजाते हुए, उनके साथ सुरेंद्र गाड़िया जी, कुलदीप सर भी मौजूद है और काफी सीनियर क्रिकेटर्स अनिल दुग्गर, सुनील देवली, विपुल गाला, सभी सीनियर क्रिकेटर्स का मैं स्वागत करता हूं. सुशील पाटिल, ऋषि केडिया, and yes, Karan Singh Walia ji is also on stage now. A good match, Team Riders versus Team Gladiators. That goes past the man, and once it went past him, it had a dot shot boundary written all over it. What a start here, off to a rollicking start here, Team Gladiators. Yeah, it's looked a different team tonight. And yes, Yash Gadia will have to make sure that his team stays in contention. It's going to be a test of his captaincy tonight. Just the way Team Gladiators made things happen in the first half, the same way Yash Gadia will have to things happen here for Team Riders in the first 6 overs. Good piece of fielding, saving 4 runs for his team. End of an expensive first over from Saurabh Loya, wherein he got some stick from Baba. 12 for no loss. Definitely it's going to be Jaikar now to bowl from the infinity end. This man in full rhythm, when he's going full throttle, is indeed one of the best sights at the Goregaon Sports Club when Jaikar Dhami is going great guns. He's already exhibited his brilliance in this GSC 2020. If he gets going, he has the potential to be such a fantastic new ball bowler. He's got everything in place, good athletic physique, good height, good technique, good run-up, good delivery stride, just about everything. He just needs to still work further and become a lethal bowler. Jaikar Dhami from the infinity end, the man on strike. For the first time, it's going to be Nishil. He's been promoted up the order. It was a first good half for Nishil, wherein he took 2 very good catches. Can he come up with the goods with the bat? This is a great opportunity for Mittal to flourish. This is the chance that he was looking for. There was room on offer, but yes, the encouraging sign for Jaikar would be that he got some good carry. That ball thudded into the gloves of the wicketkeeper at such a good height. He always does make good use of his height. This will be a good contest between bat and ball, especially when he is bowling to Aniket. It's going to be even more interesting.
Nicely done. Getting nicely behind the ball. Good technique. Playing with soft hands. Playing close to the body. Under the chin. Getting that long stride forward. Trying to negate whatever swing there was in that delivery. Good technique. Yes, all that Nishil has to do with while batting with Aniket is to just give him good company. Just play sensible cricket. That really is the only need of the hour. Play sensibly. Give good company to Baba. लाइन में तब्दीली पेश की थी लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके. वाकई में टीम राइडर्स के लिए इस तरह की स्थिति में जयकार एक हुक्मी का है. अगर उजागर होके बिल्कुल अपनी रंगत में आके गेंदबाजी करते, एक आध दो विकेट ले लेते तो फिर एक मौका बनेगा. नई गेंद के साथ पावर प्ले में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं ये रुख तय करेगा इस मैच का. अच्छी पोजीशन में आए निशिल. क्रीज के डेप्थ का थोड़ा अच्छा इस्तेमाल किया. पंच किया आखिरी वक्त पर. बल्ले के फेस को मोड़ा. गेंद डीप गली के क्षेत्र से निकलकर थर्ड मैन की दिशा में गई. बड़ी आसानी से एक रन मुकम्मल हुआ. कैन वी हैव चले फिजियो अशरफ भाई, आर यू देयर? थोड़े से डिस्कम्फर्ट में है बट यस डज नॉट सीम टू बी टू सीरियस. विल हैव टू वेट एंड वॉच. लगातार अपने गेंदबाजों को रोटेट करते रहना होगा. थोड़ा सा गैम्बल भी करना होगा. आज की शाम यश गाडिया ने थोड़े से रिस्क उठाने होंगे. थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दर्शाना होगा. He'll have to make things happen. Yes, sir, this will be a test of his captaincy, as Amarkant Jain mentioned during the mid-innings break that he is indeed a true leader. This is going to be a test of his leadership. देखना है कि कौन सी टीम इस पावर प्ले में कामयाबी के सफर पर अग्रसर होती है. जीत का परचम किसके मत्थे लहराता है देखना होगा. एक दिलचस्प क्रिकेट मुकाबला इस वक्त पेश होता हुआ टीम राइडर्स बनाम टीम ग्लैडिएटर्स. मैच नंबर 20. काफी ज्यादा वाइड. काफी खुशगवार मौसम. आशा आकांक्षा का माहौल. 5 दिनों के ब्रेक के बाद फिर से एक बार जीएससी 2020 रंगत में आती हुई. Mini vacation, we all missed being at the Goregaon Sports Club. It has become such a routine, such a good habit, and good habits die hard. So yes, it's great to be back. Very well bowled. Just look at the pace. Yes, indeed, Jaikar Dhami on his run up and then bowling full throttle is the best scene for me at the Goregaon Sports Club. Yes, Kaushik Bhai Mehta का मैं स्वागत करता हूँ. Warm welcome to Kaushik Bhai Mehta. No better sight at the Goregaon Sports Club than Jaikar Dhami bowling full throttle. At least for me, he's the best scene.
Yes, this is one of his characteristics. बाबा जब भी सामने साइड स्क्रीन की तरफ जरा भी हरकत होती है तो वो परेशान हो जाते हैं. सो ऑलवेज जब बाबा बल्लेबाजी करते हैं तो साइड स्क्रीन के वहां पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं. थोड़ा सा रूम मिला और अच्छी बात ये थी कि पूरी तरह से 100% एफर्ट लगाया था. जब आप इस तरह के स्लैशिंग अपर कट खेलते हो तो हाफ हार्टेड होना यानी कि खतरे से खाली नहीं. बाबा आज शायद कुछ अलग किस्म के मूड में है. अगर विंटेज बाबा नजर आएंगे तो ये मैच काफी जल्दी समाप्त होने के आसार होंगे. Ball racing away, no chance whatsoever. That's a dot shot boundary off the flying edge of Nishil Mittal. That dot shot boundary takes the score to 20 at the end of 2 overs. Yes, जब इतने पेस से जब गेंदबाजी करते हो तो ये खतरा भी हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा दिशा से भटकोगे तो बड़ा खामियाजा भी भुगतना होगा. तो इसी बात की खबरदारी का इख्तियार करना होगा जयकार धामी ने. So when you're bowling at that pace, you have to be very careful. You got to be spot on. And straight away, yes, जैसे कि मैं सोच ही रहा था कि यश गाड़िया बहुत ही जल्दी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने गेंदबाज को लगातार रोटेट करना होगा. बॉलिंग ब्रिगेड के हर गेंदबाज को सही मायनों में सही वक्त पर इंट्रोड्यूस करना होगा. ये अपने आप में एक मैच विनर है, हम सभी जानते हैं. यश गाड़िया एक बड़ी इंजरी के बाद वापसी कर रहे. ये सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. अपने कॉन्फिडेंस को फिर से एक बार बतौर गेंदबाज वापस लाते हुए. बहुत ही बढ़िया प्लेयर, जबरदस्त ऑलराउंडर, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का एक दिग्गज प्लेयर यश गाड़िया. एक पूरी तरह से एक ब्लॉकबस्टर पैकेज, अच्छी कप्तानी, अच्छा गेंदबाज, गुड स्पोर्ट्समैन, एवरीथिंग. चलिए एक थोड़ा सा इशारा दे दिया मित्तल को. चले ये तो बाबा के लिए ब्रेड एंड बटर है. डॉट शॉट बाउंड्री. ये अब तक बाबा के बल्ले से निकला हुआ ये चौथा डॉट शॉट बाउंड्री है. ये रनों का सैलाब इस वक्त बहता हुआ, रनों की नदियां बाबा के बल्ले से पहली बार इस जीएससी T20 में नजर आती हुई 2020 में. अच्छी गेंद, अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्क्वेलेग पर गई. सौरभ लोहिया वहां पर मौजूद थे, बड़ी आसानी से वो एक रन मुकम्मल किया. काफी जल्दी कॉल दिया था मित्तल ने और बखूबी रिस्पॉन्ड किया बाबा ने. आसान सा रन प्राप्त किया. बहुत ही बढ़िया गेंद, a pitch of a delivery, very well bowled. फ्लाइट में बीट किया बल्लेबाज को. अच्छा इनसाइड आउट शॉट, आक्रामक रंग पेश करते हुए डॉट शॉट चौका. गेंद काफी अच्छी थी
लेकिन थोड़ा सा रुक कर खेला, थ्रू द लाइन खेला, ऑन द अप खेला, इनसाइड आउट शॉट, डॉट शॉट बाउंड्री। रन संख्या 29 रनों पर, 29 रन बिना कोई नुकसान के। रिक्वायर्ड रन रेट अब केवल 6.17। इस वक्त करंट रन रेट 10.88। एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई है। डाउन द लेग साइड, सीधे सीधा अपनी अपील को वहां पर रोका यश ने। बिल्कुल ये तय करके आए ग्लैडिएटर्स कि हम अपना नेचुरल गेम बिल्कुल खेलेंगे। अच्छी गेंद, बिल्कुल मना कर दिया बाबा ने उस रन को लेने से। सही कॉल। 3 ओवर के बाद 29 रन बिना कोई नुकसान के। का मैच सुपर किंग्स बनाम वॉरियर्स। वॉरियर्स नंबर 2 पोजीशन पर है और सुपर किंग्स नंबर 7 के पोजीशन पे है। और जैसे कि हैप्पी ने कि आज सभी टीम्स ये चाह रही है कि ग्लैडिएटर्स इस मैच को जीते ताकि एक एक्स्ट्रा मौका बने और टीम्स के लिए। सो द rest of the teams are hoping against hope that team Gladiators may win this match to throw the points table even more wide open. Very well bowled. Getting the ball to kick off a length. Stamping the batsman for room straight away into the rib cage. Yes, Gangsters has played some fabulous cricket. King Shukrai mentioned that yes, I'm playing with players who have played for my team for a long time, so pretty much used to the culture of Team Gangsters. Down the leg side, wide का इशारा। जब लगातार आप 2 सीजन्स के लिए अपने किसी एक टीम के लिए खेलते हो तो वो एक टीम का एक कल्चर बन जाता है। टू डेवलप दैट कल्चर वो एक बहुत ही अहम बात है। तो किसी भी एक नए प्लेयर के लिए नई कैंप में जाकर उस टीम के कल्चर के अनुसार खेलना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। मलाड विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री असलम भाई शेख द्वारा आयोजित मलाड मस्ती का नशा सर चढ़कर बोलता हुआ आगाज हो चुका है और आने वाले संडे को सुबह 7 से 10 के बीच में बॉलीवुड पर्सनालिटीज वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। काजोल,
Sukhvinder, what a extraordinary singer, and Badshah, the king of rap. ये सभी दिग्गज personalities, they will grace the occasion at the Malad Masti on the back road coming Sunday, 7 to 10. Do not miss the event. Very well bowled, trying to go after it. Yes, मलाड मस्ती एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी बन चुकी है फेस्टिवल्स की। अगर हम बात करें काला घोड़ा फेस्टिवल को टक्कर देकर शायद एक नया आयाम चूमती हुई मलाड मस्ती, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल। और ऑलरेडी हम लोगों ने सोशल मीडिया पर ऑलरेडी देखा हुआ है कि जिस तरह से ये टूर्नामेंट, ये इवेंट शुरू हुआ, तो yes, definitely Malad Masti is one of the most awaited events in the city of Mumbai, especially North Mumbai. All credit goes to our MLA Shri Aslam Bhai. Coming Sunday, do not miss the Malad Masti on the back road, 7 to 10 a.m. Kajol is going to be there, Sukhvinder is going to be there, and even Badshah. So do not miss it. Nicely played. Looking so good and positive even in a defensive shot. Sukhvinder Singh, yes, he's a legend of Bollywood, and yes, one of the finest singers in India. And Badshah, we all know, has already made a name for himself, very popular. And who can ever forget Kajol Mukherjee Devgan? Nobody can forget her. Nicely punched away. Yes, this is the Baba that we had all been wanting to watch when in full song. Baba is so good to look at, isn't he? Yes, a champion player. That is all that I can say. The vintage Baba up on display here tonight. Yes, Nick Patel will be more than happy with the purpose and the intent that the team Gladiators have shown tonight. Into the pads. The clock has started to tick, but no. End of the over. 4 overs, 32 for no loss. Yes, the Malad Masti festival is going a couple of notches higher than one of the best festivals in the city of Mumbai, that is the Kala Ghoda festival. And yes, a string of Bollywood celebrities are going to be making their presence felt at the Malad Masti, organized by the MLA of the Malad constituency, that is Shri Aslam Bhai Sheikh. The former Guardian Minister for the city of Mumbai, was also in charge of the fisheries portfolio and did some good work, fabulous work during the pandemic. Yash to Baba. Have to wait and watch. Such a bad throw. Such a bad throw. The first and foremost, the throw was at the wrong end. It should have been at the non-strikers, and the batsman would have been out.
This is what pressure can do to your psyche. This is why we all say that it's all in the mind. The team that handles the pressure better will have that brighter chance to end up on the winning side. Yash Gadia fighting all odds. Yes, definitely team riders have their back against the wall. Definitely. There is no doubt about it. बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, और ये डेफिनेटली गेंद डॉट शॉट बाउंड्री के लिए जाएगी. चलिए, ये थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है. जेंसन एलईडी लाइट्स थ्रोइंग लाइट ऑन द डिसीजन. He has appealed for a leg before, so we'll have to wait and watch. Over to the third umpire, Kiran Purandare. सुरेंद्र गाडिया जी काफी टेंशन में नजर आते हुए. ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है राइडर्स के लिए. अगर इस मैच को नहीं जीते राइडर्स तो फिर आगे और ज्यादा जद्दोजहद करनी होगी. फिर दूसरे मैचेस के रिजल्ट्स पर आपका रिजल्ट निर्भर होगा और ये पॉइंट्स टेबल बिल्कुल ओपन हो जाएगा अगर ये मैच टीम ग्लैडिएटर्स आज की शाम जीतती है तो. इफ्स एंड बट्स, बट इस वक्त ड्राइवर सीट में है. पलटा काफी हद तक भारी है. हाँ बोलिए. Yes, the third umpire will take you through his decision. Over to Purandare. It's a fair delivery and pitching outside of stump, leg stump and missing leg stump. So, Prashant, you stay with your decision. Not out. Not out is the call from the third umpire. So yes, the batter survives to fight another day. निशिल मित्तल के लिए ये एक बड़ा अवसर है, तो थोड़ा सा रुकना होगा विकेट पर. ट्राई एंड गेट सम गुड प्रैक्टिस अंडर द बेल्ट. ये मौका मिला है. इस ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स. डू नॉट लेट इट गो अवे. Yes, the fielding team has lost one review. Yes, noted. बहुत ही बढ़िया गेंद और ये उंगली उठी है. जेंसन एलईडी लाइट्स विकेट. इस बार कोई गलती नहीं की. जिस विकेट की खोज में थे उस विकेट को हासिल किया है. शायद इस विकेट के चलते अब नव चेतना का निर्माण होगा. यस, शायद वो दरवाजा खुलेगा. जब इस तरह की विकेट गिरती है तो हम सभी लोगों ने देखा है कि ज्यादातर फिर जोड़ी में विकेट्स गिरती है, यानी एक के बाद एक. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. जेंसन एलईडी लाइट्स विकेट निशिल मित्तल के रूप में इन वॉक्स एट द नंबर 3 स्पॉट. हैप्पी, हु इज द बैटर? Sunil, the new man in. Sunil Siktia. Sundareshan it is. In comes Sundareshan at the number 3 spot. Better known as Surli. बोलिए सुशील भाई. लालू है कि सुरली है? Yes, Sundareshan, yes, is
चले ये और एक जेंसन एलईडी लाइट्स विकेट वहां पर सॉफ्ट डिसमिसल। ये मैच ने एक अजीब करवट ली है कुलदीप सर। इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज। मैं जब आप अनिकेत के साथ बल्लेबाजी करते हो तो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलना है। चलिए थोड़ा सा गलती कर गए, क्रॉस विथ हिमसेल्फ। Yeah, he will give it a good thought. He will not be able to sleep well tonight, Sundareshan. The new man in now at the number 4 spot for team Gladiators is it Sanjit Srivastava? Yes, sir. There you go, 007. 41 for 2 on a hat-trick here. Yash is on a hat-trick. Pressure will now be on the batsman. Yes, so one more man in that catching position, maybe even two more in the catching position. It's a game of words out there. Yes, a little bit of banter going out there in the middle. I'm sure that they will not cross the line, but yes, definitely putting some pressure on the batsman. The right thing to do. Two man in catching position, one forward shot like the man in slip. Nicely dug away, well bowled. Yes, back in the match. That was fired in, that came in with the arm, but was quite short for the new batter to spot it quite early. That faster one should have been more fuller in length to pose a challenge or two to the new man in. That was very short. End of a very successful over, which really got the team Riders back in the match. The score at the end of 5 overs, 42 for 2. Required run rate just 6.27. 90 balls and 94 runs to win the match. जब तक अनिकेत विकेट पे है, किसी भी तरह से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खतरा मंडराता रहेगा जब तक अनिकेत विकेट पे है। चले फिर से एक बार गेंद अपने हुक्मी इक्के को थमाइए, यानी कि सौरभ लोहिया को। सौरभ लोहिया को बिल्कुल अब एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट करना होगा। He has to be at his very best. He has to find a way to provide that breakthrough. Two quick wickets have fallen in succession. Maybe the doors will open. Yes, they have started to make things happen here. Saurabh to Sanjit. Into the stumps. Yes, a good ball to be bowling to a batsman who is quite new at the wicket. Yes, they have got one more very experienced bowler in their lineup in the form of Dinesh Yadav. Yes, Dinesh Yadav can indeed be a match winner on his day. We all know that. So yes, one more trump card up his sleeve. Yash Gadia, how he uses Dinesh Yadav will really be the key out here. For the moment, it is Saurabh. Good free flow off the bat. That's a dot shot boundary. One of the finest shots that we have seen tonight. Nicely leaning into that shot, putting bat to ball. A free flow off the bat through the line. Opening the face of the bat. Superbly timed and yes, into the gap. Such a pleasing shot to watch. Anybody who can play that kind of a shot has some serious talent. 46 for 2 with that dot shot boundary.
Turned away off his hips, clipping away off the pads, consecutive dot shot boundary. This is good rear guard action by the new man in. A big thank you to all our sponsors, Jensen LED Lights, Hex, Gajjar Group, Shakti Corporation, Parik Group, Body First, Sejal Realty, Zig Sports Studio and Edelweiss. 50 runs up on the board for Team Gladiators. Aniket, Sanjit Srivastava, Gopal Butla, Nishil Mittal already back in the herd, Siddharth Shah, Manu Gautam, Raghav Rathi, Sundareshan back in the hut, Abhay Maru, Sunil Siktia and Sunil Devli. Such depth in their batting. Yes, looking so strong on paper, Team Gladiators. And this match trigger the turnaround for Team Gladiators in this GSC 2020. Definitely too late in the day, but very well might end the campaign at the GSC 2020 with having their pride regained back. Yes, they are playing to regain their pride back. And yes, and could be the spoiler for a couple of teams. They could really spoil the party for a couple of teams. Team Gladiators. Yes, definitely Sanjit Srivastava consider himself to be a specialist all-rounder. And he has got the talent as well, no doubt about it. He has proved his class with the ball, but this season he's got to prove his mettle with the bat. If Sanjit Srivastava wants the Goregaon Sports Club to take note of his all-round talent, he has to come good in this GSC 2020 with the bat. No doubt that he is one of the deadliest bowlers at the GSC. But to flourish with the bat, yes, he will have to perform regularly right through this season. We are already ending, we are already at the end of the month of November, so he'll have to perform consistently with the bat till the 20th of Feb for us to consider him an established all-rounder. Yes, it was such end of the power play, 52 for 2. Good run rate, but 2 wickets having fallen, that really must be a small worry for Team Gladiators. Yes, what a terrific innings from Vikas Linga. It was the best innings that I have seen at the GSC from the blade of Vikas Linga. And it gives us such good pleasure when a senior cricketer, comes up with such a fighting innings. Sacrificing his natural game for the welfare of the team. He put his head down. That innings from Vikas Linga has given a chance for team riders to maybe still make a match out of this. Yash to Baba. Yes, Aniket now has decided to play the waiting game. He will take his time. Now he will make sure that he stays till the very end and he tries to take his team past that winning post. He seems to be all focused now. He means business tonight here, Aniket Kawade.
Tonight, Baba will not settle for anything less than a big win. Mind you, not just an ordinary win. Baba and Team Gladiators will not settle for anything less than a huge win. They need a huge win. Fighting it out, Team Riders here. That's an appeal, and straight away into the third umpire. That's the Jensen LED lights, throwing light on the decision. The referral was taken straight away. Over to the man in the hot seat, Kiran Purandare, the third umpire. That will be interesting watching. पहली बार डीआरएस इंट्रोड्यूस किया और शायद पूरे मुंबई शहर में पहली बार किसी बड़े जिमखाना या क्लब ने इस तरह का डीआरएस का डेयरिंग मूव किया. इतना आसान नहीं, ये बड़ी चैलेंज है. और अब तक डीआरएस के वजह से जीएससी 2020 में एक अलग किस्म की दिलचस्पी जागरूक हुई है. बट इट्स अ टफ जॉब, माइंड यू. %% टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद वी आर ट्राइंग अ वेरी बेस्ट. वी आर ट्राइंग टू एड one extra dimension to the GSC 2020 through the DRS, being sponsored by the Jensen LED lights, throwing light on the decision. It's a fair delivery. Pitching in line and missing leg stump, so not out. So Prashant, you stay with your decision. It's not out. It's not out. Chale, he lives to fight another day, and their two reviews are exhausted. Yes, team riders have exhausted both their reviews, and in the remainder of the match, they will not be able to take any more referral. Isn't it? किरण आता घेऊ शकत नाही ना कुठलाही रेफरल, दोन्ही एक्झॉस्ट झालेले आहेत. Driven downtown, all along the carpet. Yes, everybody in the camp of Team Gladiators was worried for at least 3 to 4 minutes till the decision came by. सभी का दिल हलक में था, विशेष रूप में निक पटेल का. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, सटीक फ्लाइट, सटीक पेस, बहुत ही अच्छा लैंडिंग कराते हुए यश लगातार प्रश्न पूछते हुए अपनी नपीतुली गेंदबाजी के चलते काफी अच्छा प्रदर्शन देते हुए यहां पर यश गाड़िया. यस कौशिक भाई. सात ओवर के बाद 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. करंट रन रेट 7.86, 786.
Required run rate 6.23, 78 balls and 81 runs to win the match. चलिए अब राघव रामचंद्रन कोई अवसर प्राप्त हुआ है कि गेंदबाजी करे। इन्फिनिटी एंड की तरफ से एक युवा प्रतिभाशाली टैलेंट, यंग टैलेंट। क्लासिक शॉट, डॉट शॉट चौका, एफर्टलेस। अनिकेत के बल्ले से ये 5वां डॉट शॉट चौका निकला है। ये विंटेज बाबा है। जब बाबा इस तरह के मूड में होते हैं तो बाबा को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की। That low full toss, nicely driven, man in the deep, Jay. 61 at the end of 8 overs. Yes, the only way that Team Riders can stay in contention is to keep picking wickets at regular intervals. Yeah, they cannot afford a partnership to be built at any stage. Until the time Baba is at the wicket, Team Gladiators have nothing to worry, and they've got still players like Gopal Butra to come, Siddharth Shah, Manu Gautam, Raghav Rathi. So yes, they have still got quite a few accomplished batsmen waiting in the wings. So yes, this will be a tough ask for Team Riders. It is Krish Subramaniam to bowl from the
in orbit end. And Krish Subramaniam weave his magic. Can he weave the web of deceit? A warm welcome to Sri Ramakant ji from Shark Reality. Yes, good evening, sir, and a warm welcome, Mr. Ramakant ji. That low full toss nicely turned away. Yes, sir, they will have to bowl that wicket taking line and length. They'll have to be aggressive in their mind. Maybe they'll even have to gamble to take those wickets. इसे एक बार शार्क रियल्टी के रमाकांत जी का मैं स्वागत करता हूं. चले सौरभ लोया इन चेस. इसके पहले के गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में आए, बड़ी आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया. चले लूज गेंद सही अंजाम तक पहुंचा या डॉट शॉट चौका. रन संख्या बड़ी तेज रफ्तार से अब जा पहुंचती है 68 रनों पर. रिक्वायर्ड रन रेट 6 के नीचे अब आ चुकी है 5.91, यानी कि 69 बॉल्स में केवल 68 रनों की दरकार. टीम राइडर्स बनाम टीम ग्लैडिएटर्स इस वक्त पलटा भारी टीम ग्लैडिएटर्स का. अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए यश गाड़िया. अच्छी गेंद, ये गेंद अच्छी थी. That was bowled slow through the air. आप अनिकेत जैसे बल्लेबाज को जितनी स्लो गेंदबाजी करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज ही लव्स द बॉल टू कम ऑन टू द बैट. थोड़ा सा स्लो करोगे तो फिर थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है. Yes, Aniket is now looking to play out the whole innings. 69 for 2. That ball not turning, just coming in with the arm, just turned away off his hips. Yeah, he'll have to bowl a couple of magical deliveries here. Yes, magic ball, बस यही चाहिए. हल्के हाथों से खेला, काफी लेट खेला बाबा ने. बाबा वो रिस्की रन नहीं लेगा, जरूरत भी नहीं है. परफेक्ट कॉल है. 9 ओवर के बाद 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर. यस, हमारे अंपायर्स दर्शाते हुए कि इस ओवर के बाद ड्रिंक्स होंगे. यस, हमारी टीम मोती भाई और हमारी टीम बिल्कुल तैयार भी है, कोई दिक्कत नहीं. यस, मोती भाई से दरख्वास्त करता हूं कि थोड़ा सा क्रीज मार्किंग भी कर ले, तैयारी में रहे. थैंक यू. स्ट्राइक पर बाबा.
अच्छी गेंद और गुड लीव। बहुत ही कम मर्तबा T20 में लीव देखने को मिलता है। गेंद को जाने दिया। जैसे ही और थोड़ा सा अनुभव मिलेगा इस गेंदबाज को और भी निखर कर आएगा थोड़ा सा। he'll have to put on some muscle. Very lean, yes, but yes, a good talent. Raghav. Well bowled. This is indeed such a good learning lesson here for players like Krish Subramaniam, Raghav Ramchandran. Great opportunity. This is such good bowling, isn't it? Making the batsman play at all times, trying to bring the batsman on to that front foot. Superbly bowled. This is a fabulous over. Yes, what a talent. This over really does prove that this boy has got the talent. Yes, if we can get that replay on screen, that was a magic delivery, wasn't it? There you go on screen. Yeah, brilliantly bowled. Just look at that immaculate line and length. Superbly bowled. Quite short, the ball keeping slightly low. The score at the end of 10 overs is 72 for 2. The required run rate 6.40. 60 balls and 64 runs to win the match. It is drinks time. A big thank you to all our sponsors. Jensen LED Lights for having sponsored the wickets and the DRS setup. Hex for having sponsored the man of the match vouchers. Gajjar Group for having sponsored the man of the match gifts. Parik Group for having sponsored the sixes. Shakti Corporation, Body First for gifting the man of the match awards. Sejal Realty, Edelweiss and Zig Sports Studio for having sponsored the man of the match vouchers. A big thank you to all the sponsors for their unflinching support and patronage to Karan Singh Walia and his committee. Yes, all the senior players gearing up. एक महीने में आपका वो 45 प्लस शुरू होगा. +45 का क्रिकेट इवेंट 45 प्लस क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा विज्ञापन पूरे मुंबई शहर में. इससे बड़ी एडवर्टीजमेंट क्या होगी. गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का ये 45 प्लस का इवेंट सबसे उम्दा इवेंट. Aslam bhai is back.
अपने पहले ओवर में क्रिश ने 10 रन दिए थे और अब चले अटैक में इंट्रोड्यूस किया है सबसे अनुभवी गेंदबाज को, दिनेश यादव। अपने आप में ये एक मैच विनर है, ये हम सभी लोगों ने पहले भी देखा है। क्या अपना जादू कर दिखाएंगे यहाँ पर दिनेश यादव, ये देखना होगा क्या वो जाल बिछाएंगे अनिकेत कवाड़े के लिए। अच्छी गेंद और काफी अच्छा शॉट। अपनी बहुत ही उम्दा लाइन और लेंथ के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं दिनेश यादव। बहुत ही ज्यादा फिट प्लेयर है, लगातार हर रोज अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी है, बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी। बढ़िया शॉट और ये अच्छी एफर्ट लगाई, लेकिन कोई खतरा नहीं, डॉट शॉट चौका। अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए संजीत श्रीवास्तव 4 रन्स मिले, गेंद चीरती हुई निकली। जय केडिया ने एक एफर्ट लगाई थी लेकिन कोई फायदा न हो सका, 4 रन्स मिले। 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया एफर्ट जय केडिया की, नहीं यस जय केडिया, सुपर्ब एफर्ट। 3 रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। 78 फॉर 2 रिक्वायर्ड रन रेट 6.11, 57 गेंदों में 58 रनों की दरकार। इस बीच में संदीप डिडवानिया जी का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग संदीप भाई। तो 2 रन बड़ी आसानी से ले लिए। थ्रोइंग आर्म दिक्कत है 45 प्लस क्रिकेटर्स को, कैरिंग सम निगल और दी अदर, एंड इज हैविंग अ राइट स्माइल विकास लिंगा। Yes, the Dabang Kishore Pandey is here. Yes, चलिए सभी अब बिल्कुल अपनी रंगत में आते हुए, जैसे ही 45 प्लस इवेंट घोषित हुआ है, एक अलग किस्म का माहौल छाया हुआ है जीएससी पर। अमरकांत जैन भी प्रतीक्षा कर रहे हैं 45 प्लस इवेंट का। ये सभी प्लेयर्स, काफी प्लेयर्स ये ओपन टूर्नामेंट भी खेल रहे, लेकिन 45 प्लस की एक रौनक अलग है। अच्छी गेंद, फ्लाइट में चकमा दिया था। और 45 प्लस क्रिकेट हो, T20 हो, T10 हो, कुलदीप सर तो अपनी जगह बनाए रखेंगे। कुलदीप सर और सतीश जी। Tomorrow's match, Team Warriors and Chargers. Kindly make a note of it. Team Warriors versus Chargers. Tomorrow 6:30 p.m. sharp toss time. Warriors and Chargers. Just to let you all make a note कि कल का मैच टीम वॉरियर्स बनाम टीम चार्जर्स। Thank you. 82 for 2 at the end of 11 overs. The man on strike, Baba.
अच्छी एफर्ट दिनेश यादव की, वो गेंद काफी रफ्तार से ट्रैवल कर रही थी। 83, थोड़ा सा रूम दिया, स्क्वायर कट करना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यवश सीधा फील्डर के हाथों में वो गेंद गई। थोड़ी सी लूज गेंद थी, और जब आप बाबा जैसे एक सेट बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हो तो विशेष रूप में आपकी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक होनी चाहिए। बहुत ही डिफिकल्ट चांस, नॉट इवन हाफ चांस, क्योंकि गेंद रुकी तो शायद हाथ लगा होगा। बढ़िया एफर्ट था, बहुत ही मुश्किल चांस था, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। क्योंकि ये यश था तो शायद मैं इसे हाफ चांस का दर्जा दूंगा, बिकॉज इट वाज यश। एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट सीजन का आयोजन करते हुए करण सिंह वालिया जी और उनकी पूरी आउटडोर स्पोर्ट्स कमेटी की टीम, ये जीएससी 2020 एक ब्लॉकबस्टर इवेंट हो चुका है। इस साल की कोई भी फेवरेट टीम नहीं है दोस्तों। अगर आज की शाम ये मैच टीम ग्लैडिएटर्स जीतती है तो फिर और भी ज्यादा ये टेबल वाइड ओपन हो जाएगा, और ज्यादा, and that will be good for the game of cricket. This is match number 20, सेमीफाइनल्स और ग्रैंड फिनाले को पकड़ के कुल मिला के 32 मैचेस हुए इस जीएससी 2020 में, और फिर 5 जनवरी से 45 प्लस, और उसके बाद T10 20 फरवरी तक लगातार क्रिकेट महोत्सव अंडर द लाइट्स मार्गस्थ रहेगा। उस एक रन के साथ रन संख्या अब इस 12वें ओवर में जा पहुंची है 86 रनों पर, 86। फिफ्टी balls and 50 runs to win the match, यानी कि required 100 exactly 6 and over, 50 to win of 50 balls. काफी ज्यादा शॉट, थोड़ी सी आगे की तरफ गेंद को करनी होगी। रामचंद्रन ने कम से कम 2 फुट और आगे, अच्छा टैलेंट है। इतना आसान नहीं होता है गेंद को ग्रिप करना, विशेष रूप में जब आप रिस्ट स्पिन गेंदबाजी करते हो तब थोड़ा सा और मुश्किल होता हुआ। ओवर की समाप्ति 12 ओवर के बाद 87 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 48 गेंदों में केवल और 49 रनों की दरकार। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज बाबा दर्शा रहे, ही इज जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, इट इज जस्ट लाइक अनदर डे इन ऑफिस नाउ। ये तो रात दिन बाबा यही करते रहता है। So he's just treating this match like any other routine day in his life. असलम भाई ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत एक हाफ सेंचुरी के साथ की थी असलम भाई ने, और एक अच्छी इनिंग्स भी खेली थी 30 प्लस की। उसके बाद 2 इनिंग्स was the downfall, and he will be looking to come up with another good couple of performances. Karan Singh Walia had a fantastic knock of 69 runs, 68 और 69. तो ये सीनियर क्रिकेटर्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। But as once again the star players have been आर्यन पटनी, शाश्वत झुंझुनवाला, रोहन गज्जर, सागर उच्चिल, विक्रम पंजवानी,
Rahul Jha, Monish Shah, Vedant Gadia, Saurabh Lohia, Pratik Bhane, the star players. Yes, getting a hand to it saved 3 runs for the team. Superbly timed Pari Group Chakka. (98 रन संख्या जा पहुंची है. एक बड़ी जीत की तरफ तेजी से बढ़ती हुई टीम ग्लैडिएटर्स, और जितनी बड़ी जीत यहां पर दर्ज कराएगी ग्लैडिएटर्स, उतना ही ज्यादा ये टेबल और भी वाइड ओपन होगा. ना केवल जीत से बल्कि बड़ी जीत के साथ और ज्यादा वाइड ओपन होगा. वो नेट रन रेट बहुत ही मायने रखेगा. फिर कैलकुलेटर्स विल कम आउट. और इसी वजह से जैसे कि करण सिंह वालिया ने बताया कि प्लीज आप आपके कैलकुलेशंस ऐप के अनुसार आप खुद ही कर लीजिएगा बिजनेस एंड में. यस, वी विल नॉट टेक एनी कॉल ऑन दैट. यू हैव टू look for yourself into that app. We have burnt our fingers once the last season. Will not do it again. So yes, always keep an eye on the app. What app? जो ऐप बोलेगा वही फाइनल होगा. 100 runs up for team Gladiators. And yes, Nick Patel and Pranav Asher are happy gentlemen out there. That is even 50 for Aniket Kawade. क्या बात है. 100 for the team and 50 for Aniket. Yes, अशरफ भाई थोड़ा सा मैदान पे जाइए. अशरफ भाई with the spray. चलिए. This 50 was overdue from Aniket a couple of innings back. Yeah, this is vintage बाबा. ये तो अब बिल्कुल मन बना लिया है कि अपनी टीम को जीत के उस तरफ ले जाऊंगा और फिर ही पेविलियन में आऊंगा. This is now like any other day in office for Baba. Being a professional cricketer, this is what he does regularly. Raghav. Pulling his last over nicely, coming onto that front foot, putting his head down. Just look at his focus, just look at his grit, look at his determination. This is vintage Baba. Nicely bowled, very well bowled. Such a beautiful delivery. That moral victory definitely for Ramchandran. Yes, this is also such a good lesson for Krish Subramaniam, Ramchandra to be bowling to Aniket. The way he prepares himself for a match, the way he exhibits his body language in this kind of a situation, the way he builds his innings, a good lesson, learning lesson for all these youngsters. यही तो होता है कि ये सभी क्रिकेट मैचेस में यही तो सीखना है. Just pick up the tricks of the trade from the champion players and you yourself become a better cricketer. Timed, but straight to the man in the deep. Just a single added. That was well timed, but was straight to Jaikar. 102. Just 34 more to win of 39 balls. The target seems to be getting easier now.
जीत की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ती हुई टीम ग्लैडिएटर्स। मैं गुजारिश करूंगा हमारे आकाश सिंह को कि जैसे ये मैच खत्म हो तुरंत ही हमें पॉइंट्स टेबल दर्शाए। वो नेट रन रेट का कॉलम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज। That points table will really be very interesting to watch. सभी टीम्स 8 के 8 टीम इस मैच के बाद 8 ही टीम्स ने अपने 5 राउंड रॉबिन लीग मैचेस खेल लिए होंगे। बिजनेस एंड कल से शुरू होगा, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट। रॉ टैलेंट है राघव के पास। इस टैलेंट को थोड़ा सा ठीक तरह से तराशना होगा, ठीक तरह से उसे गाइड करना होगा। Nicely taken. That's a Jensen LED lights wicket. जिस विकेट की खोज में थे अनिकेत ने अच्छी टाइमिंग के साथ शॉट को खेला, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, कोई गलती नहीं की। अंडर प्रेशर काफी अच्छा कैच गिरा। अनिकेत कवाड़े का वो जेंसन एलईडी लाइट्स विकेट गिरा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू। ये शायद एक छोटा सा दरवाजा खोलेगा टीम राइडर्स के लिए। एक आशा की किरण अब जागरूक होती हुई। They were hoping against hope that we get that wicket of Aniket after such a good innings. He comes back to the pavilion, but उन्होंने अपनी भूमिका को काफी सकारात्मक अंदाज में निभाया है। बहुत ही बढ़िया कैच लिया वहां पर प्रकाश लिंगा ने। लिंगा ब्रदर्स एक ही टीम के लिए खेलते हुए प्रकाश लिंगा और विकास लिंगा। विकास की आज उस इनिंग्स की जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम होगी। आज ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेला है विकास ने। जिस अपना टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस आज बिल्कुल दर्शाया विकास लिंगा ने। एक फाइटिंग इनिंग्स खेली, अपने नेचुरल गेम को सैक्रिफाइस किया, अपने स्वभाव से विपरीत इनिंग्स खेली आज टीम के लिए। अब सीधा अब यश ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है इन ऑर्बिट एंड की तरफ से। अब तक यश ने कितने ओवर्स किए हैं? 3 ओवर्स की है यश ने। यश का ये आखिरी ओवर, यानी कि आखिरी अपॉर्चुनिटी फॉर यश टू पिक अप अ विकेट और 2। थोड़ा सा दिशा से भटके यश को इस ओवर में 6 के 6 गेंदों के साथ प्रश्न पूछने होंगे। इतनी आला गेंदबाजी करनी होगी। That was too full, almost a half volley. He'll have to bowl a probing line and length. He's literally got to ask a question with every delivery. He's got just 5 more balls to come in this spell. And he's got to pose a challenge or 2 with whatever deliveries is left to bowl in this spell. What a champion player Yash is, but definitely his back is up against the wall, no doubt about it. Those singles which are leaking have to be stopped. Singles have to be stopped.
Too full. Nicely timed. That's a dot shot boundary. Again, the चीरती हुई निकली. Nelson figure 111. अब 33 गेंदों में केवल और 25 रनों की दरकार. कल का मैच टीम चार्जर्स बनाम टीम वॉरियर्स ठीक 6:30 बजे टॉस टाइम. बढ़िया टाइमिंग और ये मौका बना था वहां पर, मिस कर गए. डॉट शॉट चौका. चले उस चौके के चलते अब बड़े जोरों से जीत के दरवाजे पर दस्तक देती हुई टीम ग्लैडिएटर्स. संजीत श्रीवास्तव को आज कप्तानी की जिम्मेवारी दी और आज बड़ी रंगत में आकर एक बहुत ही शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया है संजीत श्रीवास्तव ने. विशेष रूप में हम सभी को बल्ले के साथ प्रभावित किया है संजीत श्रीवास्तव द बैटर ने. (31 balls and 21 to win the match. 31 गेंदों में केवल और 21 रनों की जरूरत. स्ट्राइक पर कप्तान श्रीवास्तव. कलाई के सहारे मोड़ दिया. आसानी से वो 1 रन मुकम्मल हुआ. रन संख्या 15 ओवर के बाद 116 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इस वक्त करंट रन रेट 7.73. रिक्वायर्ड रन रेट केवल 4.00. 30 गेंदों में केवल और 20 रनों की जरूरत. बिल्कुल आसान सा लक्ष्य. 7 विकेट्स हाथों में और 2 या 3 काफी अच्छे बल्लेबाज, प्रॉपर बल्लेबाज आने बाकी है. द राइटिंग ऑन द वॉल. But still, this remains to be a glorious game of uncertainties. You still never know. जयकार धामी अपने बॉलिंग रनअप मार्क करते हुए एट द टॉप ऑफ हिज बॉलिंग रनअप. चले एक या 2 विकेट्स, मे बी अ कपल ऑफ विकेट्स इन क्विक टाइम इन द नेक्स्ट 2 ओवर्स. अगर 2-1 विकेट लेने में कामयाब होते तो शायद एक वापसी रचने में शायद कामयाबी मिल सकती है. Yes, anything can happen still. You never know. जयकार धामी. क्या जयकर धामी वो 2 मैजिक डिलीवरीज प्रोड्यूस कर सकता है? 2 विकेट टेकिंग डिलीवरीज किसी भी हाल में इस वक्त जरूरी टीम राइडर्स के लिए. एक वापसी रचनी अगर तो 2 विकेट्स लगातार लेने होंगे. 2 मैजिक डिलीवरीज, नॉट जस्ट 1 बट यू नीड 2. This is good, sensible batting. Sanjit Srivastava is on to 45 of 36 balls with the help of 6 dot shot boundaries and 1 party group sixer. Can he get himself to that first half century of the season? To really get his confidence skyrocketing as a batter. What an innings here by Sanjit. Just the way Vikas Linga played such a good innings, trying to pick a leaf out of his book. This is such a useful contribution by the captain Sanjit Srivastava tonight. Good all-round performance. Just what the doctor ordered.
Ball keeping slightly low into the stumps. Nicely played, putting his head down. Yes, both these batters will not be wanting to take any unnecessary risk to somebody like Jaikar. They would really treat him on merit. That's the way to go about things. Treat a frontline bowler on merit. You need not try and manufacture the shots at this stage. The situation does not demand it. So just play the waiting game. Two to go in this over. Into the pads. सीधे सीधा अंपायर ने अपनी पोजीशन को छोड़ा. बिल्कुल ये दर्शाया कि इज नॉट इंटरेस्टेड. लेग बाइस के रूप में 1 रन मिला. फील्डिंग टीम हैज लॉस्ट बोथ देयर रिव्यूज. तो रेफरल लेने का तो कोई सवाल ही नहीं. आज मेरे राइट साइड पर मैनुअल स्कोरर के रूप में है रोशन कनौजिया. वेल डन. लेंथ डिलीवरी. जयकार धामी की स्टॉक डिलीवरी है. स्टॉक डिलीवरी से काम नहीं बनेगा. विकेट टेकिंग डिलीवरी प्रोड्यूस करनी होगी. 2 मैजिक डिलीवरीज की प्रतीक्षा करते हुए यश गाडिया जोरों शोरों से दस्तक देती हुई जीत के दरवाजे पर टीम ग्लैडिएटर्स. हेलो, ठीक है. सौरभ लोहिया अब गेंदबाजी करेंगे. एक 119 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर्स के बाद, यानी कि अब 24 गेंदों में केवल और 17 रनों की दरकार. फिर से एक बार गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हमारे यूट्यूब के सभी श्रोताओं का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं. 5 दिनों के एक ब्रेक के बाद हम सभी फिर से आपस में कनेक्ट होते हुए अब लगातार नॉन स्टॉप क्रिकेट होगा. केवल मंडे को मेंटेनेंस डे के दिन ब्रेक होगा. इसके अलावा अब ग्रैंड फिनाले तक हर रोज क्रिकेट मैच होगा इस GSC 2020 में. इससे एक बार आप सभी का शुक्रिया अदा यूट्यूब के सभी व्यूअर्स का. अपने रनअप को थोड़ा सा मिस किया लोहिया ने. 46 रनों पर संजीत श्रीवास्तव केवल 38 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्का उनके बल्ले से देखने को मिले हैं. शॉर्ट बाउंड्री, बाहरी किनारा लेने में कामयाब हुए थे, लेकिन फर्स्ट स्लिप पे कोई भी फील्डर न होने की वजह से केवल एक ही रिजल्ट संभव था. 50 रन हो चुके हैं सौरभ लोहिया के. यस, द बैट इज रेस्ड. ही वाज
Looking at that, Sanjit Srivastava, that century from half century from his blade. That will really make him feel so good. He accepted the challenge of just 39 balls. That captaincy has brought out the best from him. What an innings, a terrific innings. Lapse in concentration. यही तो सीखना है कि जब आप इतना सेट हो चुके हैं तो अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस आना है. जब आप अनबीटन आते हो तो फिर वो एक अलग किस्म का समाधान होता है. That is the best feeling when you come into the pavilion unbeaten. Change in pace, that back of the hand delivery, not the right execution. The feeling when you come back unbeaten into the pavilion after having scripted a victory for your team is the best feeling. That is really unmatched. No other event on the field can really get that feeling to you. That is unparalleled. That is unmatched. Coming unbeaten. But that single, the score now on to 125. Just 11 more to win. केवल औपचारिकता बाकी. The writing on the wall. इस बात में कोई संदेह नहीं. अब ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता हुआ कि ऐसी स्थिति में से केवल इस मैच को एक ही टीम जीत सकती है और इस वक्त वो टीम वाकई में टीम ग्लैडिएटर्स नजर आती हुई. जितनी बड़ी जीत आज दर्ज कराएंगे उतना ही ज्यादा ये पॉइंट्स टेबल ओपन होगा. जो भी टीम्स 4, 5, 6 पोजीशन पे थे वो यही चाह रहे थे कि टीम ग्लैडिएटर्स इस मैच को जीते ताकि एक मौका बने और वही हुआ है. अच्छी गेंद, थोड़ा सा लेट खेला. जब आप गेंद को लेट खेलते हो तो नीचे टप्पा गिरने के बाद गेंद पीछे की तरफ आती है. That is, the ball comes back into the stumps whenever you play that ball late. It really hurried on to the bat. The score at this stage is 125 for 3. Just 11 more to win. Still waiting in the wings. Gopal Bhutra all padded up. Siddharth Shah. Fantastic talent on exhibition at the GSC 2020. Quite a few youngsters have made their debut. Yes, we have at least, if I'm not mistaken, 8 to 10 debutants in this tournament, maybe even more. I'm not too sure. But yes, the youngsters have really performed so well. Even the seniors, the marquee players of the 45 plus brand of cricket have really played some fantastic cricket. Yes, all in all, this GSC 2020 season number 2 is indeed becoming a blockbuster event and will very soon be the most awaited annual events on the calendar of the Goregaon Sports Club. A pat on the back for Karan Singh Walia and his team for the wonderful organization, superb designing, superb planning and lovely execution. Big thank you to the staff members of GSC, the groundsmen of the GSC. They are doing a swell job, absolutely fantastic job. The staff members and the groundsmen. Sensible batting, yes.
Never throw it away. Especially when you have brought your team to the brink of a victory. Do not leave that business to be done for the others. You yourself got to finish the job. Do not ever leave it for others to get the job done. Always do it yourself. ये मूल मंत्र है. 17 balls and 10 runs to win the match. The man on strike. Abhay. Nicely played. देखिए अभय मारू ने कितना लेट खेला उस गेंद को. अच्छी गेंद थी एन वक्त पे बिल्कुल अपने चिन के नीचे केवल एक फ्लिक ऑफ द रिस्ट. बहुत ही अच्छा शॉट. टर्निंग इट अवे राउंड द कॉर्नर. Such a good looking shot, a free flow off the bat, nicely timed, but straight to the man in the deep. Single handed takes the score to 129. One more ball to come in this over. 13 गेंदों में केवल और 7 रनों की दरकार. की हुई गेंद अच्छी पोजीशन में आए. देखे कितना सेट हो चुके हैं कि कितनी जल्दी उस गेंद की लंबाई को परखा. चारों दिशाओं में अपनी रनों की रंगोली को सजाया है आज कप्तान संजीत श्रीवास्तव ने. ओवर की समाप्ति. चलिए दोस्तों, अब 18 ओवर के बाद 130 रन 12 गेंदों में केवल और 6 रनों की दरकार. जस्ट 6 more to win of 12 balls. Saurabh.
बड़ी आसानी से वो रन प्राप्त किया। रन संख्या बढ़कर अब 132 रनों पर केवल और 4 रनों की जरूरत। जस्ट 4 more to win। High and handsome, we'll have to wait and watch। हवाई यात्रा पर हो गेंद निकली, 6 रन्स मिले पारी ग्रुप छक्के के साथ। संजीत श्रीवास्तव ने अपनी टीम के लिए एक बड़ी जीत दर्ज कराई है। कुलदीप सर, करण सिंह, विवेक नरसरिया, झा साहब। Hello. Yes, may I invite Surendra Gadia ji to please come up on stage. Jha Sahab. Yes, Aslam sir will always be there. Ramakant ji from Shark Realty, and Karan Singh Walia ji, Sandeep Didwania ji. May I invite all these gentlemen to please come up on stage for the prize distribution ceremony, and congratulations to both the teams. Yes, can we have that points table ready? It is ready. Yes, Vivek Bhai Narsaria, you need to come on stage. Team Challengers now on number 1 position. Team Warriors number 2. Gangsters 3. Blasters 4. Riders 5. Chargers 6. Super Kings 7. And Gladiators still at 8. तीन टीम्स 6 पॉइंट्स पर है, वॉरियर्स, गैंगस्टर्स और ब्लास्टर्स। वॉरियर्स की नेट रन रेट है 0.841, गैंगस्टर्स की नेट रन रेट है 0.273 और ब्लास्टर्स की नेट रन रेट है -0.676। ये अपडेटेड पॉइंट्स टेबल है। स्क्रीन पर इस वक्त पॉइंट्स टेबल आपको नजर आता हुआ। हेलो। Yes, a big thank you to the 3 umpires for having a good game. Kiran Purandare, the 3rd umpire, Prashant Dubey and Yogesh Kamble. हमारे सभी ग्राउंड्समैन का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बहुत ही अच्छी विकेट उपलब्ध कराई। Yes, sir, cellist. Yes, sir, we have got all the gentlemen for the prize distribution function on stage. Ramakant ji, Vivek Bhai Narsaria, Surendra Gadia ji, Aslam Bhai, Jha Sahab, Karan Singh Walia ji. Where is Mr. Sandeep Didwania ji? Yes, sir. I'll request Sandeep ji to please come up on stage. Straight away. Yes, Ajay ji, आपको भी आना है. Thank you. May I invite Yash to please come up on stage to have a chat with us. A round of applause for Yash Gadia. Yash, that winning momentum that you had before that break of 5 days has really been cut short. A bad day in office, and I'm sure that your team was at least 25-30 runs short tonight. No, I think we really don't have to think about the batting. Bowling mein jo start chahiye tha, we didn't get that. So it is fine, guys. Momentum and all are just on a given day. Aaj Gladiators got the momentum in the first 6 overs. So it is all about how you play on that day rather than the momentum.
But still, your team has a chance. You got to recover and play some brilliant cricket in the next two round robin league matches to qualify. Definitely, all their youngsters are putting their hands up. Like Raghav bowled really well today, and Saurav had a bad day, but it's fine. You cannot really expect him to bowl all the time, so it's good. We'll bounce back stronger. Yes, sir. Thank you, and wish you the very best as we get into the business phase of this GSC 2020. And it's time for the winning team captain to come up on stage. It is, yes, a new captain who was handed over the reins of the captaincy, and it's turned out to be the super knight for Sanjit Srivastava. Here he comes, and yes, the team will applaud him all the way. Well done, Sanjit. Yes, this innings was long due for him. The captaincy seems to have worked the magic for you. Superb captaincy, good batting and lovely bowling. It all clicked for you tonight. Honestly, if I would say, I wanted to captain since a very long time. I've been and it was just that I was going for the toss, but Baba told me to lead kar le, and I agreed to it and I play according to it. I like to take the pressure on me and play the game. क्या बात है. Yes, he's setting a high benchmark for himself, but well done. And Team Gladiators still is at the bottom of the table, but you all have to play for that pride to be regained back, and you all could be the spoilers for a couple of teams. That's the plan. Chale, well done, and you'll have to stay back because you get the man of the match award as well, and it will be Aslam Bhai, Jasap and Ramakant ji to jointly hand over the man of the match award goodies. Yes, he gets a marathon goodie bag that we had made for the marathon. He gets body first gift. He gets a glaze of Gajjar Group, and yes, gift vouchers from Zig Sports Studio. Yes, and before he leaves us, it is Aniket who would like to say something. एक सेकंड बस आज का मैच हमारे लिए हमेशा की तरह क्रूशल था बट सब लोग बातें चल रही है ये सब वैसा ये सब छोड़ के आज मैं स्पेशली दो लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है. एक तो राघव राठी जो पहला मैच खेला आज, उसने पहला जो स्पेल डाला है 4 ओवर का, ब्रिलियंट स्पेल. सेकेंड मनु गौतम, तो दोनों ने पहला, मनु इज अ वेटरन हियर एंड ही इज प्लेइंग, बट जो आज उसने इंटेंट से बॉलिंग डाला है, सो कुछ ना कुछ हम लोग ने मतलब आज लक था हमारा या वट एवर, बट ये दो लोगों को स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था एंड आई रियली अप्रिशिएट देम फॉर वट एवर दे हैव डन एंड होप लेट्स कीप द फॉर्म गोइंग. Yes, well done, well said. And yes, Aslam Bhai, a few words from you, the closing remarks before we end this tonight. I think so. It was a very fantastic game today, and as usual, everyone was thinking the game was going to be very nice and the youngsters would perform well. But the cricket is a game. Sometimes it completely depends on luck. And today the luck was favoring the Devils, and I think so. And I was the time I came over here, and today I had a gut feeling that today Baba is going to perform because he's one of the among the best players on Goregaon Sports League. 5 people are there. He's also he's been lagging from last 4-5 matches. He couldn't perform, and he did a good job. And I think so. Still, you don't have to lose hope. You still have all the good matches pending, and I think so. You can still do the best. And thank you, Hindi. मैं तो गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि एक फैंटास्टिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है. मेरे ख्याल से जिस तरह मलाड मस्ती की चर्चा उस तरह इस टूर्नामेंट की भी चर्चा इस मुंबई शहर में हो. और ये नाम गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब है लेकिन है मलाड के अंदर, तो मलाड का नाम जो है इस मुंबई शहर में एक यूनिक डेस्टिनेशन में आना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर कंपेयरिंग ऑल्सो. गॉड ब्लेस. थैंक यू सो मच. इसी के साथ आज की इस औपचारिक शाम यहीं पर समाप्त होती हुई कल ठीक 6:30 बजे मिलेंगे टॉस टाइम. कल का मैच वॉरियर्स बनाम टीम चार्जर्स. गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, शब खैर.
Yes, so welcome and good evening to everyone. Goregaon Sports Club presents 2020. आज मैच नंबर 10 की शुरुआत होने जा रही है. After winning the toss, team Chargers have decided to bowl first. खूबसूरत ये ग्राउंड और खूबसूरत ये नज़ारा, फ्लड लाइट्स पूरे शुमार पर है. दोनों ही टीम्स डगआउट से अपनी तैयारियां बहुत अच्छे पैमाने पर कर रही है. और ये देखिए, आज ये गेंद से फर्स्ट इनिंग की शुरुआत होगी. हमारे साथ अंपायर प्रशांत दुबे और प्रथमेश आंग ने रुक करते हुए पिच पर हमारे टीवी अंपायर होंगे मिस्टर किरण पुरंदरे सर. और ये मैच नंबर 10 दोनों ही टीम के लिए बहुत ही वैल्यूबल है. फ्राइडे फीवर, क्रिकेट का फीवर चल रहा है और आज चार्जर्स वर्सेस ग्लेडिएटर्स के बीच एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, जहां टीम चार्जर्स ने अपने इस प्रतियोगिता के 2 मैच खेलकर पिछला मैच सिर्फ 1 रन से पीछे रहे थे और इस टूर्नामेंट की तैयारी बहुत जोरों शोरों पर है. दूसरी तरफ टीम ग्लेडिएटर्स, जिन्होंने अपने दोनों मैच में जीत हासिल नहीं हो पाई थी, उनकी कोशिश होगी कि इस मुकाबले में चार्जर्स के सामने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए अपने खाते में 2 पॉइंट अर्जित करे. यस, स्वागतम, गुड इवनिंग टू एवरीवन. मैच नंबर 10 की शुरुआत होने जा रही है. Gladiators, after winning the toss, they have the Chargers, after winning the toss, they have decided to bowl first and have asked Gladiators to bat. Both the opening batters are at the center.
यस, सो मैच की अब शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज शंकर सुब्रमण्यम एंड उनके साथ अनिकेत कवाड़े। अनिकेत स्ट्राइक पर होंगे और बॉलिंग के लिए तैयार है आशीष। यस, काउंटडाउन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play new. आशीष की पहली गेंद जोरदार अपील है, स्पिन गिवन आउट। अनिकेत को यहां पर लेग बिफोर विकेट करार दिया और स्ट्रेट अवे डीआरएस लेने का निर्णय लिया है। जेंसन एलईडी लाइट्स, डीआरएस, थ्रोइंग लाइट्स ऑन डिसीजन। It's a fair delivery, waiting for ball tracking. Ball tracking coming. Pitching line impact on the stump. Prathamesh, you can stay with your own decision. सो पहले विकेट यहाँ जेंसन एलईडी लाइट, विकेट नंबर पहला गिरता हुआ। एक जबरदस्त शुरुआत यहाँ कैप्टन अनिकेत आउट होते हुए रुक कर रहे हैं पेविलियन की तरफ। एक बेहतरीन गोल्डन शुरुआत आशीष सिरोया की। May I request gladiators to please send one guest player in commentary box for the name and a score confirmation, please. First ball wicket for team Chargers. A good start, in fact a brilliant start by Ashish. Very first ball.
And that's the first boundary of this evening. बेहतरीन shot. ये लगता हुआ dot shot चौका. Wow, that was a very good ball, but no says umpire. So very good and decent start by Team Chargers. First ball, first wicket for Ashish, getting the big man out. Captain Aniket was out leg before wicket, and then on third ball, good connection with the bat, and Sundarishan getting that first boundary of this match. Score is at 4 for 1. Nice, just guiding the ball and a slightly misfield there by the fielder. So score now moves on to 4. Nice shot, but straight towards the fielder. That's the end of first over. 4 for 1. देखिए बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत यहाँ टीम चार्जर्स को मिली है. आशीष ने पहली गेंद पर विकेट हासिल की. इसके बाद एक चौका लगाया सुंदरीशन ने. पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद. बिल्कुल दक्ष एक यंग कैप्टन है, जानते हैं अपने बॉलर्स को किस तरह से उनके स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी करने के लिए कहना है. एक अच्छी यूनिट यहाँ पर टीम चार्जर्स की दिखाई दे रही है. कुछ चेंजेस है आज टीम चार्जर्स में. जो उनके प्लेइंग 11, दक्ष अग्रवाल टीम कैप्टन, शाश्वत झुंझुनवाला, उज्जवल गोयल, प्रणीत बने, कमलेश चाडवा, आशीष रोया, अमित शाह, असलम शेख, हर्ष देसाई, अलुक सोमानी एंड विकेट कीपर विपुल गाला. टीम ग्लैडिएटर्स अनिकेत कवाड़े, संजीत श्रीवास्तव, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट. बहुत अच्छी शुरुआत प्रणीत द्वारा. टीम ग्लैडिएटर्स में संजीत श्रीवास्तव, सचिन करतड़े, गोपाल पुटड़ा, निशिल मित्तल, संचित अग्रवाल, यश मंधाना, शंकर सुब्रमण्यम, सुंदरेशन, अभय मारू एंड सुनील तिवारी. सुनील तिवारी जरूर बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे. बहुत अच्छी गेंद प्रणीत की. देखिए एक स्ट्रॉन्ग यूनिट Yes, Sunil Devli. प्रणीत की गेंद बहुत ही बेहतर लाइन पर इस गेंद को कर रहे हैं प्रणीत. 3 गेंदों पर 3 डॉट गेंदें उन्होंने की है. एक बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ आज टीम चार्जर्स खेल रही है मैच नंबर 10.
जोरदार अपील। ये देखिए बैकअप है लेकिन थ्रो नहीं किया था, बिल्कुल सही सोच। लेग बाइस के रूप में ये अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ इस मैच में पहली बार। स्कोर बढ़ रहा है 5 पर। पहला रन मिला ओवर नंबर 2 के इस खेल में। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद ये प्रणीत की। विकेट कीपर विपुल भी थोड़ा सा आश्चर्य में नजर आए जिस तरह से गेंद गिरकर घूमी। यहाँ पर 22 के रूप में एक और रन जुड़ता हमारे साथ हमारे दोनों ही स्कोरर प्रथमेश और रवि, इनका स्वागत है। आकाश वेलकम। आज हमारी पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम प्रमोद सर इनकी निगरानी में बहुत ही अच्छा कार्य करे पिछले 10 मैचेस से। लाइव यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत। चार्जर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल कंट्रोल तरीके से इस गेंद को खेला शंकर ने। एक पहला बड़ा झटका लगने के बाद शंकर एंड सुंदरेशन ने बहुत संभलते हुए 2 ओवर का ये खेल खत्म किया है। एंड ऑफ 2 ओवर स्कोर इज 7 for 1। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Ashish to continue over number 3 from commentator's end. आज के खेल के पहले ही गेंद पर आशीष ने विकेट हासिल किया और बहुत ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण है ये गेंदबाज। बहुत अच्छी गेंद, क्योंकि एक से संतुष्ट होंगे। सिंगल से काम बन रहा है। स्लो बट अ स्टेडी स्टार्ट लेग बाइस के रूप में। फील्डिंग की अच्छी जमावट की है दक्ष ने। अच्छी गेंद, एक 22 के रूप में और 1 रन जुड़ रहा है। सिंगल्स में अधिकतर डील हो रहे एक्स्ट्रास का ये फायदा निश्चित रूप पर ग्लैडिएटर्स को मिल रहा है। जोरदार अपील एंड यस इज आउट। So second wicket goes down. Jensen LED lights wicket number 2.
देखिए, दो जल्दी से विकेट गिरे हैं। लेग बिफोर विकेट के रूप में शंकर लौट चुके हैं डगआउट में और उनका स्थान लेने के लिए आए हैं निश्चल मित्तल। आशीष की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जारी है। जिनसन एलईडी लाइट्स दूसरा विकेट गिरा है तीसरे ओवर में। इस समय तेज गेंद जरूर की थी लेकिन पूरी तरह से दायरे से बाहर। आशीष को फिर से एक बार इस गेंद को डिलीवर करना होगा। ये वाइड गेंद है, सो एक्स्ट्रा के रूप में रन जुड़ता हुआ 2 अंकों में स्कोर पहुंचा है ग्लैडिएटर्स का 10 पर 2। तीसरा ओवर चल रहा है, 3 गेंदें शेष। पहली 2 गेंदों पर लेग बाई के रूप में एक एक रन मिले। तीसरी गेंद पर लेग बिफोर विकेट आउट हुए शंकर। फिर ये गेंद वाइड। मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। वेलकम कुलदीप जी, गुड इवनिंग। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल पटकी हुई गेंद अंदर आई। निश्चल ने उसे बहुत ही संभल कर खेला। ग्यारह पर 2 गेंदें शेष। हमारी टीम ग्लैडिएटर्स के प्राउड ओनर मिस्टर निखिल पटेल, मिस्टर प्रणव अशर, इनको हम दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। वाह, बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया इस अपील को कि जैसे ही गेंद ग्लव्स में आई विपुल गाला, इन्होंने जोरदार अपील की। इस बार धीमी गति की गेंद, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी वहां चूक होती हुई और इसका फायदा एक रन में तब्दील होता हुआ ये रन। सुंदरेशन ने इस ओवर की समाप्ति की है 1 रन लेकर। 12 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। एंड ऑफ 3 ओवर, स्कोर इज 12 for 2। लिए 4th ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रणीत। एक स्लिप रखी गई को दक्ष स्लिप पर मौजूद है। वेरी गुड बॉल बाय प्रणीत और उतनी अच्छी फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू पर। देखिए, जिस प्रकार से चार्जर्स ने एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ शुरुआत की है, आशीष और प्रणीत ने, सभी फील्डर्स भी बहुत ही अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। दक्ष कुछ स्लिप में मौजूद है। एक पॉइंट, एक गली, एक कवर्स, एक मिड ऑफ, एक स्वीपर कवर। बिल्कुल, ये अगेन
ओ माय गॉड, स्वीपर कवर के फील्डर से मिस्टेक हुई है और मिलेंगे 4 डॉट शॉट बाउंड्री आती हुई। बहुत ज़रूरी रहेंगे ये सारे बाउंड्रीज और यहाँ पर इस चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है 16 रनों पर, 16 पर 2। देखिए आशीष डायरेक्ट हिट नहीं है बिल्कुल, और लेकिन उतनी ही सेफली पहुंच गए थे निश्चित। ओ ये वाइड गेंद, ठीक है, उस गेंद तक पहुंचकर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे निश्चिल। निश्चिल 1 पर बैटिंग कर रहे हैं और सुंदरेशन बैटिंग कर रहे हैं 10 पर। सुंदरेशन ने 2 चौके लगाए, बहुत ही कॉन्फिडेंट लुकिंग बैटिंग अब तक सुंदरेशन की देखने मिली है। इस बार बिल्कुल लाइन से चौके प्रणीत, और एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ। बहुत नियंत्रण खोया है दोनों गेंदबाजों ने, कुल मिलाकर लेग बाइस के रूप में 4 और वाइड के रूप में 3 और एक 22 के रूप में रन मिले हैं। क्योंकि गेंद बहुत सही संभल कर एक अपने इस इनिंग्स को प्रोग्रेस करना चाहते हैं निश्चिल। निश्चित रूप पर ये उनके इस बैटिंग अंदाज से, बैटिंग स्टाइल से ये महसूस होता हुआ। और बढ़िया गेंद, रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन बिल्कुल बहुत ही तेज दौड़ लगाते निश्चिल एंड सुंदरेशन। इसी सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ चुका है 19 रनों पर, माफी चाहेंगे 20 पर पहुंच चुका है, 20 रन्स। चौथा ओवर चल रहा है प्रणीत का। बहुत अच्छी गेंद, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एंड ऑफ 4 overs, स्कोर इज 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आकाश, ये पहले 4 ओवर का खेल बिल्कुल बहुत ही सराहनीय रहा है टीम चार्जर्स की तरफ से, लेकिन ग्लैडिएटर्स पिछले 2 ओवर से बहुत ही संभल कर खेलते हुए, खासकर सुंदरेशन और निश्चिल। सुंदरेशन ने 2 चौके लगाए हैं और अपने टीम के लिए बहुत ही किफ़ायती इनिंग्स यहाँ पर वो ज़रूर शुरुआत कर चुके हैं। बेहतरीन पहली गेंद पर क्विकली 1 रन ले लिया है निश्चिल ने। निश्चिल ने इस पार्टनरशिप में अब तक बहुत बेहतर काम किया है। सुंदरेशन जो अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, उनको स्ट्राइक रोटेट करके देना, ये इम्पोर्टेंट बात रही है उनके दिमाग में।
21 for 2. इट्स अ वेरी गुड बॉल। आशीष ने ये तेज गेंद की थी, उसको बहुत ही सही नतीजा दिया सुंदरेशन ने। सुंदरेशन का इसी सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 पर और टीम का स्कोर पहुंचा है 22 पर 2। गुरेगांव स्पोर्ट्स क्लब प्रेजेंट्स 2020 कप सीजन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैच नंबर 10 आप देख रहे हैं लाइव एक्शन। वाह, बहुत अच्छी गेंद ये आशीष की। बिल्कुल गेंद के साथ बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। यही रीज़न है दक्ष ने उनको तीसरा ओवर करने के लिए बुलाया है। इस ओवर में 3 सिंगल्स उन्होंने दिए हैं। ये चौथी गेंद तो बहुत ही लाजवाब रही। सरप्राइज ज़रूर हुए बल्लेबाज। पैड पर ये गेंद लगी, लेकिन इसमें कोई खतरा नहीं होगा सुंदरेशन को। लेग बाइस के रूप में 1 रन जुड़ेगा। लास्ट बॉल होगी ओवर नंबर 5 की। 24 रन हुए हैं 24 for 2। स्लो गेंद, स्लोअर डिलीवरी थी। जैसे ही गेंद हाथ से निकली बिल्कुल निश्चल ने सही तरीके से खेल दिया। 5 ओवर की समाप्ति, 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर ग्लैडिएटर्स। यस, कैप्टन दक्ष आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। कैच इज द कॉल, लेकिन सेफ रहेगी ये गेंद। कि सुंदरेशन बिल्कुल संभल कर इस इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। 12 रन पर पहुंच चुके हैं 17 गेंदों में। कोई उनको दिक्कतें नहीं हुई है। शुरुआत के कुछ गेंदों पर ज़रूर दिक्कतें थी, लेकिन अब पूरी तरह से आसानी से हर एक स्ट्रोक को वो कंट्रोल तरीके से खेलते हुए। बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर। विपुल विकेटों के पीछे जरूर खड़े हैं, यहाँ पर कोशिश अच्छी थी। बेहतर तरीके से इस गेम के लिए बहुत अच्छी फील्डिंग आलोक द्वारा, और थ्रो किया है। खतरा हो सकता है।
एंड देखिए जरूरत नहीं थी, आलोक ने बहुत अच्छा काम किया एंड विपुल ने बहुत ही विदाउट वेस्टिंग ए टाइम तुरंत गेंद को कलेक्ट करते हुए हिट किया स्टंप्स पर। बहुत अच्छी सोची थी, कुछ कदम वो स्टंप से दूर गए, लेकिन वो कुछ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बचाने के लिए उन्होंने बहुत ही सही डिसीजन दिया। गेंद को, ये बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छा काम। जेंसन एलईडी लाइट, विकेट नंबर 3 गिरता हुआ। निश्चल यहाँ पेविलियन में लौट चुके हैं और अब नए बल्लेबाज दाखिल होने जा रहे हैं। देखिए स्मार्ट वर्क डन बाय विकेट कीपर विपुल गाला। सो 3 विकेट्स आर फॉलन डाउन। ग्लैडिएटर्स को जरूर अब एकदम संभल कर खेलते हुए बिना कोई रिस्क लिए, कि यहाँ पर दूसरा रन लेना जोखिम भरा था। आलोक ने चतुराई दिखाई, थोड़े क्विक रहे और एक अच्छा थ्रो किया। संजीत नए बल्लेबाज दाखिल हुए हैं। 2 balls to go in this ओवर। पावर प्ले की आखिरी ओवर चल रही है, 26 पर 3 है ग्लैडिएटर्स का स्कोर। दक्ष की गेंद, बिल्कुल बहुत सही तरीके से इस गेंद को खेला, गाइड किया। आलोक कोशिश करेंगे लेकिन गेंद पहुंचेगी बाउंड्री के लिए, डॉट शॉट बाउंड्री। सो कि संजीत ने आते ही एक चौका अपने नाम पर ले लिया है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बिल्कुल सेटल होकर ही आए ऐसे महसूस होते हुआ। इस बार गलत शॉट और बिल्कुल सेफ रहे। देखिए कॉलिंग बिल्कुल भी नहीं थी, दोनों ही प्लेयर्स के बीच तालमेल में कमी नजर आई और एक लाइफलाइन यहां मिलती हुई संजीत को। 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए हैं। पावर प्ले का खेल पूरा हुआ है। 6 ओवर के कंप्लीट होने पर स्कोर है 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। या कमेंट्री एंड से गेंदबाजी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कमलेश। पावर प्ले ओवर अच्छे रहे टीम चार्जर्स के लिए, 3 विकेट उनको प्राप्त हुए। 32 रन बनाए ग्लैडिएटर्स ने। स्पेशली जिस प्रकार से सुंदरेशन ने एक एंड संभालते हुए अब इस इनिंग्स में मन बना लिया है कि वो एक निजी बड़े स्कोर पर ज़रूर अग्रसर करेंगे। अब यहाँ से सोच होगी कि 10 ओवर तक इसी तरह से दोनों ही बल्लेबाज बने रहकर एक सम्मानजनक स्थिति में स्कोर को लेकर आए। सही और बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर टीवी अंपायर की मदद ली जाएगी।
Not out. It's not out. Bat behind the popping crease. When Bell's dislodged. चलिए बहुत ही अच्छी से ये एक रन पूरा किया संजीत ने। बहुत ही फटाफट से उस कॉल को एक्सेप्ट किया था उन्होंने। अच्छी सोच है, अच्छी समझदारी दोनों ही बैटर्स के बीच, संजीत एंड सुंदरेशन। बहुत ही अच्छे से सेम वही नतीजा इस बार संजीत ने कॉल किया था और सुंदरेशन ने उस कॉल को एक्सेप्ट करते हुए एक और रन जोड़ लिया। पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल मिले हैं कमलेश के इस ओवर की। पावर प्ले बहुत ही अच्छी रही, 32 रन वहां जुड़ चुके थे ग्लैडिएटर्स के द्वारा। सही बिल्कुल आगे पिच की गई गेंद, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, चार्जर्स की शुरुआत बहुत बेहतर रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 3 विकेट खोने के बावजूद अब सुंदरेशन एंड संजीत बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दोनों ही बैटर्स का। फ्लाइट डिलीवरी, देखिए कमलेश ने बहुत ही अच्छे से इस गेंद को फ्लाइट करा था स्वीपर को, फीडर की अच्छी फील्डिंग और 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। वेल डन, गुड रनिंग। की पार्टनरशिप अब 11 की हो चुकी है बेहतर तरीके से। दोनों ही बल्लेबाज बिना कोई समय गंवाते हुए सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं और अच्छी सोच रखी है। स्ट्राइक रोटेट जैसे ही आप करते रहेंगे एक पार्टनरशिप में, दोनों ही बैटर्स के लिए उतना ही फायदा होगा। बिल्कुल सही, सही गेंदों को, अच्छी गेंदों को सम्मान करो। ये हर कोच आपको ये बेसिक बात डे 1 से बताते हैं। सही गेंदों को सम्मान करो और बुरी गेंदों को बेहतर तरीके से समाचार लो। विद द स्पिन संजीत ने इस गेंद को गाइड कर दिया ऑन साइड के रीजन पर। स्क्वायर लेग रीजन है, मिड विकेट लॉन्ग ऑन रीजन पर खिलाड़ी मौजूद। इसके साथ ओवर की समाप्ति आकाश, 7 ओवर के बाद 38 पर 3। बहुत बेहतर रही पिछली ओवर। कमलेश के उस ओवर में 6 रन दिए। दोनों ही नए गेंदबाजों ने, दक्ष और कमलेश ने अच्छी ओवर की शुरुआत की है। ग्लैडिएटर्स और चार्जर्स के बीच ये मैच नंबर 10 की शुरुआत हो चुकी है। टॉस जीतने के बाद चार्जर्स ने एक अहम निर्णय लिया, जो पिछले कुछ दिनों से एक सभी कैप्टन्स ने जो निर्णय लिया वही फ्लो के साथ दक्ष जाना चाहेंगे, ये उन्होंने किया। टॉस जीतने के बाद एक बेहतर निर्णय उनकी टीम के लिए फायदेमंद रहा। पहला पावर प्ले का खेल, बहुत अच्छी एफर्ट इन द फील्ड, कवर्स पर खिलाड़ी मौजूद है। एक स्लिप रखी गई है, थोड़ी सी वाइडिश रखी गई है स्लिप। बहुत अच्छी दक्ष की गेंदबाजी में एक अच्छी एक्शन तो ही है, लेकिन उनके पास अच्छे वेरिएशन है। शॉर्ट रनअप है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, हमेशा से कोशिश करते हैं विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने के लिए। बिल्कुल सही, संजीत जानते हैं दक्ष के इस रणनीतियों को। 2 रन आसानी से, 2 रन की मांग थी और 2 रन पूरा करेंगे संजीत। पार्टनरशिप अब पहुंच चुकी है 14 रनों पर। टीम का स्कोर पहुंचा है 40 पर। पहले 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया था, लेकिन तीसरी गेंद पर जो पैरों पर की गई थी गेंद दक्ष द्वारा, पर 2 रन हासिल किए। अच्छी ओवर चल रही है दक्ष द्वारा। इस ओवर की अब आखिरी गेंद होगी।
That's very good. So end of over number 8 of 40 for 3. Good over completed by Captain Daksh. दक्ष ने 2 ओवर के खेल में 10 रन देकर बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग रखी है. Would like to thank all our partners, our sponsors. पारिक ग्रुप जो हमारे सिक्सेस के स्पॉन्सर्स है, बॉडी फर्स्ट, शक्ति कॉरपोरेशन, सेजिल रियलिटी, एडलवाइज, जीक स्पोर्ट्स स्टूडियोज जिनके माध्यम से मैन ऑफ द मैच के गिफ्ट वाउचर्स प्रेजेंट किए गए हैं, डॉट शॉट और अ बाउंड्री पार्टनर, हेक्स, गज्जर ग्रुप, जेंसन एलईडी लाइट्स जो कि हमारे डीआरएसएन विकेट पार्टनर है, जेंसन एलईडी लाइट्स थ्रोइंग लाइट ऑन डिसीजन. कमलेश की इस पहली गेंद पर बहुत बेहतर तरीके से सुंदरेशन ने 1 रन खेला है. दोनों ही बैटर्स की सोच बहुत ही क्लियर है कि इन दोनों ही स्पिनर्स को बेहतर तरीके से खेलना है. जब भी आपको अगर आपके दायरे में, आपके आंख में अगर गेंद गिरती है तो उसे बड़े शॉट में तब्दील कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल रणनीति क्लियर है, 10 ओवर तक खेल ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे. बिल्कुल सही, बहुत अच्छी गेंद, बेहतर तरीके से उसे खेलते हुए संजीत जैसे ही पहली गेंद खेलने के आए थे उन्होंने चौका लगाया था, स्पिन को जांचा, देखा और बहुत अच्छी तरह से गाइड कर दिया था थर्ड मैन की तरफ. नाइस बॉल, बहुत अच्छी गेंदबाजी कमलेश की. 2 लगातार गेंदें डॉट रही है, कोई रन देने का मौका नहीं. बिल्कुल सही, लॉन्ग ऑफ पर कैप्टन दक्ष मौजूद है. अच्छी ओवर यहाँ पर कमलेश द्वारा. 5 गेंदों पर मात्र 2 रन दिए हैं. पहले और 5वीं गेंद पर सिंगल मिले. संजीत को बहुत अच्छी तरीके से खामोश रखा है उन्होंने. किन क्रेडिट देने होगी संजीत एंड सुंदरेशन की. बहुत बढ़िया बैकफुट पर थे, लेकिन थोड़ी सी देखिए, थोड़ी सी गड़बड़ी तालमेल में नजर आई थी, लेकिन ओवर थ्रो का एक फायदा उनको मिला. सिंगल से अब स्कोर बढ़ा है 43 पर. 9 ओवर के समाप्ति, 9 overs आर कंप्लीटेड, 43 for 3. After 10th over, it will be a drinks time.